প্রথম কতগুলো এখানে অবস্থা স্লাইডস ग्रांटेड क्वेश्चन ऊपर नहीं ये ऊपर था हाँ सेम तो Okay. Good morning to all of you. I think I am audible to all of you. Jai Jagannath. Let us start today's class. Today's topic is your atomic structure. You know, the topic is your atomic structure. Okay. So it is the important part of this part. De-Broglie wave equation is most important for this chapter. As you know, this equation helps in verification or validation of your Bohr's model. It gives the most important postulate of your Bohr's model. Okay, that where an electron can revolve in a circular path or in an orbit. Okay, am I audible, students? Yes, sir. Okay, so without delay, let us start today's class. This is your first part of this Bohr's model is your de-Broglie wave equation. What happened last class? You must have discussed about wavelength, frequency, everything. Okay, relationship between your energy, frequency, wavelength. Now what happens? And de-Broglie, actually the spelling must be like this. Okay, so de-Broglie. Okay, this is French scientist, so the first letter must be small. Okay, so de-Broglie equation says if a particle, you know there are two natures of light. Okay, so one is your wave nature, another is your particle nature. Okay, this is called your dual nature of light. Okay, when the quantum mechanics starts from here actually. So you know, when you are considering a light energy according to Einstein's photoelectric effect, you know E must be equals to mc square. Okay, according to Planck's quantum theory, you know, if you treat this as a light wave, then it will give you the energy value h nu. Okay, electromagnetic radiation or whatever may be the radiation or wave, it will give these two energy values. But if this is for the same electromagnetic wave, then the energies must be equal. ଗୋଟେ ଜିନିଷର ମୁଁ ଦିଟା ୱେରେ ଏନର୍ଜି କାଢିଲି, ତାହେଲେ ଦିଟା ଯାକ ଏନର୍ଜି ମଷ୍ଟ ବି କଣ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସେମ୍. ଓକେ, ସୋ ଏଇ ଦିଟା ଯେତେବେଳେ ଇକ୍ୱେଟ କରିବ, ସମାନ ଭାବେ ନେଇଯିବ, you will get E is equal to mc square
must be equals to h nu, and you know that mc square must be equals to hc by lambda, because the relationship between nu and lambda, wavelength and frequency, is nu is equal to c by lambda. Yes or no? Okay, so now you can cancel c over here. It will give you the lambda value, wavelength value. The wavelength value is coming as 8h by mc. Okay, clear? So this was the de-Broglie equation. से कहले कौनसी भी substance रा जदि dual nature रहिबो ताले तार wavelength lambda must be equals to h by mc. Remember, here the velocity c is for velocity of light or electromagnetic waves. तो ये जो equation टा लिखिचे जेतबेले तुम गोटे microscopic particle नै थिबो तार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टर्म रे कंसीडरेशन थिबो सेतिके बेले तमे ए इक्वेशन पकै दबो. ठीक अछि ना? काहे की कहली ना एठी c रो वैल्यू टा सबले फिक्स थाए 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक अछि पिले मन रखे थिबो डी ब्रोग्ली वेव इक्वेशन जेतबे बाहरी थिला ए इक्वेशन टी समस्त इक्वेट करिके काढी देले. तापर डी ब्रोग्ली कोन कहिले हेलो ना? हाँ सर सर एडी लैम्डा कोन रिप्रेजेंट करछि, एच कोन रिप्रेजेंट करछि, आ एम कोन रिप्रेजेंट करछि, एवं आपण तो कहले सी डार कांस्टेंट वैल्यू अछि, बाकी तीनटा कोन रिप्रेजेंट करछन्ते? ओके बेटा कहि दउची. एक्चुअली एटा प्रीवियस क्लास रा पाठ थिला, म भाबिली जानिथिबो. एबे कहि दउची. सपोज दिस इज योर वेव. ओके, it has a wavelength. This is the wavelength. Wavelength is represented as lambda, the distance of a complete wave. एटा गोटे complete wave. एठो पर्यंत गोटे complete wave तार distance टाको कहंती wavelength lambda. ओके, ठीक अछि. हां सर. अच्छा, न्यू टा होची तमरा फ्रीक्वेंसी. न्यू इज योर फ्रीक्वेंसी. ओके, फ्रीक्वेंसी ओके सर. फ्रीक्वेंसी कौन ना? सपोज तमरा एमती गोटे वेव जाउची, देखिथिबो तमे ट्रेन प्रॉब्लम भी देखिथिबो छुआ दिने स्कूल रे, जे एमती धर गोटे वेव जाउची. ठीक अछि, एठी बहुत सारा वेव अछि, 1 2 3 एमती करी infinity number of waves अछि. Suppose I am a person, I am standing over here. This is the point where I am looking at. एठी गोटे ट्रेन लाइन रे ट्रेन जाउची. ठीक अछि, तो ट्रेन रे बहुत सारा बगी अछि. मु बसिकी काउंट करूची मते एई पॉइंट को बा एई पुल को केतेटा बगी गोटे सेकंड रे क्रॉस करूचंती. ठीक अछि, सपोज मु देखिली गोटे मिनिट रे 120 टा बगी क्रॉस करिके पळेले गोटे मिनिट रे. ताहले मु जानि 60 सेकंड रे 60 सेकंड्स रे मोर 120 बगीज क्रॉस करिके गले. ताहले केते 1 सेकंड रे केतेटा बगी क्रॉस करथिबे ना? 120 by 60. अब सो दिस इज टू. तो एक सेकंड रे ई पुल को 2टा बगी क्रॉस करिके जाउचंती. सो दिस इज इट्स फ्रीक्वेंसी. सेमती ए बगी जगह रे वेव को थोइ दियो. दिस इज वन वेव, दिस इज वन वेव. इफ the number of waves crossing a particular point in 1 second is called its frequency. Okay, हां ठीक अछि. आ wavelength आ frequency भीतर रिलेशनशिप टा होची nu is equal to c by lambda. Am I clear? यस सर. Okay, so सुन, तुमको टिके गोटे मिनिट रा हिस्ट्री कहूची सो दैट तमे जानि परिबो जे डी ब्रोग्ली फेमस केमती हेले. एक्चुअली खड़ा हेतला डी ब्रोग्ली इक्वेशन बाहर करले. ठीक अछि, तापरे से विदाउट वेरिफिकेशन, विदाउट एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से गोटे ढाबा मारथिले. हम जो ओडिया रे कहंती तु माने ढाबा मारिबा बा हिंदी रे कहंती तुक्का मारिबा.
ब्लफ करवा से भली गोटे गैम्बल करथिले कोन करथिले ना से कहले जदि कोनोसी गोटे पार्टिकल जदि कोनोसी गोटे पार्टिकल रो मास m रहिछि ठीक अछि सीए मूव करूछि इन ए वेव मैनर ओके वेव मैनर रे मोशन करूचे सीधा हे पारे बंका हे पारे किछि भी वेव आकार रे से मूव करूचे देन ता वेलोसिटी नॉट मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट गोटे पार्टिकल ता गोटे पत्थर को पाडिबो ता वेलोसिटी ता तो केबे भी वेलोसिटी ऑफ लाइट से तो समान होबन स्टिल से कहिले स्टिल सेही केस रे भी ए इक्वेशन ता इंप्लीमेंट करि हबो ओके सो से कोन कहिले ना कोनोसी पार्टिकल रो वेलोसिटी जदी v हबो यू कैन रिप्लेस द वेलोसिटी ऑफ लाइट c विथ दैट वेलोसिटी v ओके सो सीए प्रपोज करथिले जे लैम्डा फॉर एनी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल देखो एथरे कहथिले माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जोडा को खाली आखि को धीरे धीरे देखा जाउ नथिबे बा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फाइन कहथिले बट तमे गोटे बड़ टेनिस बॉल नै जाइछो पत्थर गोटे नै जाइछो से गुडा को पई ए इक्वेशन से सजेस्ट करले जे h by mv कर दबा वेलोसिटी ऑफ लाइट न नै का को नै जिबा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओके जो पार्टिकल नै थिबो तार वेलोसिटी नै जिवो ठीक अछि तो से एति के कहि देली ठीक अछि जेता बेले कैलकुलेशन करा गला सिग्निफिकेंटली ए लैम्डा टा जेति के आसीबा कथा माने थियोरेटिकली एक्सपेरिमेंटली भी सेति के आसीला सेथि पय डी ब्रोगली फेमस हे गल जे से कहिले c कैन बी रिप्लेस्ड विथ b हला ताको आहुरी फेमस करेले बोर्स मॉडल आउ टिके पर हमें देखिबा से केमिति फेमस हेतिले बट एबे पय जानि था दीटा इक्वेशन ऑलरेडी जानि सालणी डी ब्रोगली इक्वेशन रे सेटा हला h इज इक्वल टू lambda is equal to h by mc and if it is any other particle having velocity v then you can apply the equation lambda is equal to h by mv okay remember one thing this is h is your Planck's constant this is your Planck's constant okay so Planck's constant value you must know for numericals this is your 6.626 into 10 to the power minus 34 joule into second joule per second no joule into second okay joule second clear okay आकु चलले देखा de-Broglie's prediction was confirmed when देखा ए एक्सपेरिमेंट रे से इलेक्ट्रॉन फॉर एन इलेक्ट्रॉन अंडरगोज डिफ्रैक्शन माने से गोटे सॉलिड ऊपर पड़ी की जाईची तार पाथ टाको देखि चंती से केमिति मूव करिची ठीक अछि तो या परे देखा डिफ्रैक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव गोटे वेव डिफ्रैक्ट करिवो कोनोसी सरफेस रे पड़ी की सेटो फेरिबो ठीक अछि तो से गुडा को कहा जाय डिफ्रैक्शन जो थरे तमरा एक्स-रे करा होची हातर दैट इज आल्सो ए डिफ्रैक्शन प्रोसेस ताहले टिके बुझी पारियो डिफ्रैक्शन रे कोन होय कोनोसी सॉलिड ऊपर लाइट पड़ले ता स्ट्रक्चर दवा को कहा जाय डिफ्रैक्शन ओके ठीक अछि एगुडा को तो ताकर थियोरेटिकल एस्पेक्ट थिला हमें टिके केवल इक्वेशन पट को जिबा this phenomena has led to the development of electron microscope as ordinary microscope uses wave nature of light
देख एथिरे पार्टिकल नेचर वेव नेचर दीटा जाक रहला ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप रे वेव नेचर देखा होतला जेबे एबे आजिकली जो थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को देखि पारुचे तांकु कहा जाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आहुरी एडवांस माइक्रोस्कोप भी बाहरी सालाणी इट वाज द बेसिस ऑफ de-Broglie इक्वेशन ठीक अछि से केते टाइम्स मैग्निफिकेशन रखि पारुची 15 मिलियन टाइम्स मैग्निफिकेशन ला हो वर्तमान देखा the wavelength associated with ordinary object are short से कहला जो हमर गोटे पत्थर फोपाडला तार वेवलेंथ गुडा को बहुत छोट थाए अल्प थाए ठीक अछि short because of their large masses such that their wave properties cannot be detected ना ताकर सहजरे वेव प्रॉपर्टी काढी हुएनी ताकर वेवलेंथ गुडा को बहुत शॉर्ट थाए ठीक अछि तो wavelength associated with electron and other subatomic particles with very small masses can be determined experimentally छोट जोडा को माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नेले तांकर एक्यूरेटली तमे वेवलेंथ पाई परिबो ठीक अछि स्टिल छोट हेले भी से माने भी पार्टिकल ओके सो कोनोसी भी माइक्रोस्कोपिक हो मैक्रोस्कोपिक हो बोथ पाइन तमे वेवलेंथ काढी परिबो एक्यूरेसी कोथरे अधिक माइक्रोस्कोपिक क्लियर सुनो इक्वेशन पार्ट को जिबा ठीक अछि देख एठु तमरो स्टार्ट हे गला it can be deducted from two fundamental equation जोटा कहूथिली तुमको ओटा हैला E is equal to mc square that is your Einstein's mass equivalence relationship okay आ गोटे तमरो होचे मैक्स प्लैंक्स इक्वेशन बा प्लैंक्स इक्वेशन E is equal to h nu ए दिटा को इक्वेट करले हमको मिलुची अच्छा एथि मु चारिटा जाक तार इक्वेशन लिखि दउची आमे समस्त ताकू प्रॉपर्ली देखिबा से हिसाब रे न्यूमेरिकल करिबा ओके सो प्रथम ए दिटार इक्वेशन को इक्वेट करले किछि एमते पाउचे हम E is equal to mc square थिला ठीक अछि mc square is equal to h nu implies mc square is equal to hc by lambda cancelling c from each side you are getting lambda is equal to h by mc okay this is for electromagnetic wave de-Broglie equation for electromagnetic wave okay again see if c is replaced by v where v is the velocity of any particle then equation 1 becomes equation 1 टा कोन हे जाउची lambda is equal to h by mv equation 2 any particle having mass m you can apply this equation okay again तमे physics पढ़ पड़ी we know हमें कौन जानचे देखो कह ना linear momentum को हमें कहंती p symbolically कौन कहंती p is equal to mass into velocity okay तमे जानचे कौन linear momentum is equals to mass into velocity so putting p instead of mv I can write this equation equation 2 becomes equation 2 टा कोन हे जाउची देखो ना lambda is equal to h by p
देखो एट लिखा हैतिला h/p ठीक अछि तो ये हैला हमर इक्वेशन 3 केतବେଳେ এটা अप्लाई करियो इफ यू नो the linear momentum value of a particle linear momentum mass दे नथिबो velocity दे नथिबो किंतु ता प्रोडक्ट linear momentum देथिबो ताले ए इक्वेशन अप्लाई कर क्लियर now come to this part देखो एथिरो हम जानले एटा हम जानिचे ऑलरेडी वी नो एटा काइनेटिक एनर्जी पिला दिन रु पढ़ी आसीच ता फार्मूला केते थिला कह mv²। ओके ठीक है चेक कल मु या को लिखि परिबी mv² इज इक्वल टू 2 इनटू काइनेटिक एनर्जी हे जो 2 टाइप पट को नहीं गले ठीक है देखो लेफ्ट साइड रे जति m इनटू mv² कली तो राइट साइड रे I must multiply another mass so this will be like this m into mv² must be equals to 2m into kinetic energy okay so देखलो ये लेफ्ट साइड ता एया लिखि पारुची एठी कर दोची so this will be giving you mv whole square m square v square this is m square v square so I am writing mv whole square must be equals to 2m kinetic energy so mv will be equals to root over of 2m kinetic energy okay so देखो mv रो आ गोटे वैल्यू केते कहिला 2m kinetic energy root over तल देखो ए इक्वेशन 3 टाकू हमें एमते 2 टाकू एमते लिख परिबा केते लिख परिबा लैम्डा इज इक्वल टू h by root over of 2m kinetic energy okay this is equation 4 तो ई चारिटा तमरा फॉर्म रहिला यदि वेलोसिटी ऑफ लाइट स्पीड देथिबो ताले इक्वेशन 1 यदि एनी अदर वेलोसिटी देथिबो इक्वेशन 2 यदि लिनियर मोमेंटम देथिबो इक्वेशन 3 यदि काइनेटिक एनर्जी देथिबो it will equation 4 will be used ए चारिटा इक्वेशन टिके स्क्रीनशॉट नै के रख सो दैट एबे न्यूमेरिकल को जाई परिबा ठीक अछि क्लियर निगला क्लियर अच्छा ना गायब हे गले ଅଛୁ ସାର୍ ଅଛୁ मझे मझे टिके एमती कहबो ये सर डन सर ठीक अछि नले आकु जीवा केमती आकु चलिए हां देखो भाई जो डेरिवेशन करले सेटा से तुमको देखै छी ठीक अछि सेम डेरिवेशन सेटा जाक टर्म रे करा है छी और अदर पार्टिकल लेट द वेलोसिटी v ताले कोन हे जाउ छी देन वी हैव lambda is equal to h by mv since mv is equal to p this is giving you p for angular momentum of an electron angular momentum काढिया पाई ठीक अछि देखो एथिरे एटा ए इक्वेशन टा को टिके देखो दिस इज द इक्वेशन यूज्ड एज मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल से कहला कोनोसी इलेक्ट्रॉन ए गोटे सर्कुलर ऑर्बिट रे बुलीबो ए गोटे सर्कुलर ऑर्बिट रे बुलीबो केते बेले बुली पारिबो ठीक अछि
दीटा कंडीशन अछि पिले दीटा कंडीशन अछि आगो को पिक्चरियली बुझेबी एबे टिके आइडिया दे दे सो दैट तमे दीटा जाक पढिला बेले आउ थरे बुझिबो ठीक अछि सुन when an electron revolves in circular path it moves in a wave manner it is itself a particle किंतु से जाए केमती वेव मैनर रे ठीक अछि ओके देखो ये गोटे वेव है ठीक अछि आ गोटे वेव मु इलेक्ट्रॉन ता सपोज एमिति जाईछि वेव आकार रे ठीक अछि एमिति कंडीशन है ठीक अछि ता माने सपोज इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट goes in a wave like manner comes to that point and goes again in the same path आउ थरे कहूची जोठू स्टार्ट हेतिला सेठी पहुंचीबो आ पुनी सेम पाथ रे चलीला ता माने तमे कहि परिबो नाही इलेक्ट्रॉन को जगारु स्टार्ट हेतिला से एमिति गोटे सर्कुलर पाथ रे वेव रे इन्फिनिटी टाइम पर्यंत चली ठीक अछि याकू कहते कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इन फेज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फेज ओके बेले बेले कौन हबो एठी इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हैला वेव आकार रे गला जेतबेला सेठी पहुंचीबो से आ जोठू स्टार्ट हेतला सेठी पहुंचीबोनी एका जगह रे मिसी पारिले नाही ठीक अछि तो ई कंडीशन को कहा जाए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और तम रह जाए आउट ऑफ फेज मोशन ठीक अछि मन रखिबो जो जगह रे इफ द इलेक्ट्रॉन satisfies this in phase condition से जगह रे तमे सर्कुलर ऑर्बिट ड्रॉ करि परिबो बा सेठी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ रे रिवॉल्व करि परिबो बुझेला कोन कहिले जति आउट ऑफ फेज कंडीशन हे जिवो सेठी इलेक्ट्रॉन के बे रिवॉल्व करि परिबो नाही या माने एया जति गोटे न्यूक्लियस तमरा एठी रहिला जने पिला आसीबो कहबो सर मोर एठी गोटे सर्कुलर पाथ रहइबो एठी इलेक्ट्रॉन बुलिबो आ गोटे पिला आसीबो कर नाही तमे महाज्ञानी नहो आमे होचु महाज्ञानी तन करे आमर इलेक्ट्रॉन एई सर्कुलर पाथ रे बुलिबो एठी बुली परिबो नाही काहा कथा तमे विश्वास करिवो नाही डी ब्रोग्ली का कांसेप्ट आ बोर मॉडल को पळइबो सेठी पाठ कोन कहिला ना काहा कथा विश्वास न करे एठी वेव ड्रॉ करिवो इफ इन द वेव नेचर satisfies in phase condition सेठी इलेक्ट्रॉन बुली परिबो जो जगह रे आउट ऑफ फेज हे जिवो से जगह रे इलेक्ट्रॉन बुली परिबो ना am I clear or not yes sir ओके सो वर्तमान पाठ कहला जदी इन फेज कंडीशन सैटिस्फाई होची ये एथिरु ए जिंसटा डिराइव हेछि विथ द हेल्प ऑफ कोन डी ब्रोग्ली इक्वेशन ए जिंसटा शो करथिले के बोर नेल्स बोर इन हिज एटॉमिक मॉडल ओके सो सेथि पई ए कंडीशन बाहरी बारे डी ब्रोग्ली इक्वेशन को से यूज करथिबारु de-Broglie became famous है ना स्टार्टिंग रो से फेमस नथिले बोर जेतबेले ए कंडीशन रे तांकर इक्वेशन यूज करले सेति बेले से फेमस हे गले ठीक अछि देख तो कोन हैला नंबर वर्तमान एटा गुटे हुए तो 8 वे पर्यंत आमे जानछे केते लैम्डा ओके सो दिस इज योर लैम्डा सपोज मोर एमिति गोटे कंप्लीट रिवोल्यूशन बा सर्कुलर पाथ रे एनटा लैम्डा अछि एटा भी लैम्डा हेथियो सपोज आई हैव एन लैम्डा ओके ताले मु कहि परिबी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव डिस्टेंस ऑफ वेव्स कहि देले भी हे जिवो जेतिकिटा वेव थिबे तांकर टोटल डिस्टेंस केते आसी गला एन लैम्डा हबा
वर्तमान देखिले this is a circular path. If it is the radius r, then the circumference परिधि circumference केते आसीबो ना it must be 2 pi r. ओके तन देखिला 2 pi r टा होची एतिकी आउ n lambda टा भी होची सेतिकी कंपाइन ना एमती lambda lambda मिसे मिसे गले n lambda टा भी केते हबो एठु स्टार्टिंग है कि एठी पहुंची ताल देटा जाक डिस्टेंस समान हेथिबे ना अलगा हेथिबे समान हेथिबे तो पाठ सेठी स्टार्ट हे गला जे n lambda must be equals to केते आसिला 2 pi r. ओके lambda रो वैल्यू किए देथिले तुमको de-Broglie केते कहिथिले h by mv तो एबे ए इक्वेशन को बोर आनी के एठी यूज कर देले कोन करले कह n into h by mv is equal to 2 pi r. So it gives you देखो mvr को गोटे साइड रे रखि देली mvr is equal to nh by 2 pi. ओके देखो ए इक्वेशन मिली गला ना नहीं कहार हेल्प रे मिलला ना de-Broglie इक्वेशन. ओके de-Broglie इक्वेशन हेल्प रे सेथि पई एटा को कहा जाय this is the significance or relationship between Bohr's model and de-Broglie wave equation. Okay, so mvr is equal to nh by 2 pi. Clear? तो एठी तमे कहि परिबा this is your angular momentum is equal to n टा सब बेले कोन हेथिबो होल नंबर मल्टीपल 1 2 3 एमति पकेइबो ठीक अछि तो एटा n whole number multiple of h by 2 pi. Clear? Whole number multiple of h by 2 pi. ओके जहा देखिले ताको आ टिके पिक्चरियली गोटे मिनिट देखि दबा तापरे नेक्स्ट सेशन को चल ठीक अछि. देख on rearranging the above equation it gives you a thing. From de-Broglie equation we have lambda is equal to h by तो एठी आसी गला देखो therefore एति हमें ए थ्रू एपट को करथिले से उल्टा पटे देखि देला ठीक अछि. देखा तुमको जो पिक्चर देखैथिले ओटा सर्कुलर पाथ हला से जदी इन फेज हबो कोठु स्टार्ट हिचे तमे कहि परिबो नाही ले देखो छ जो कंडीशन रे 2 पाई r इज इक्वल टू कोन हे जिवो n लैम्डा एथिरे कंडीशन केते अछि यार कंडीशन कोन आसिला 2 पाई r मस्ट बी इक्वल्स टू n लैम्डा तो लैम्डा जगह रे h by mv खाली ओके दो. क्लियर? देखा कौन कहले both end of wave meet each other without crossing. जो एंड जो ठो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हेतिबो सेठी आसी के मिसी जिवो के का को क्रॉस करी के पळेइबे नाही ठीक अछि. देखा आउ टिके भी देखे दैछि इन फेज एमिति एठु स्टार्ट हैला से पूरा वेव आकार देखो एमिति जाईछि सर्कुलर पाथ रे ऊपर को गोटे वेव तळ को गोटे वेव जाई के आसुछि पुनी एग्जैक्टली से जगह रे मिसी जाउछि किंतु एथरे देखो जोठु स्टार्ट हेछि ए एरिया रे गोटे तमर ओवरलैपिंग रहिछि ठीक अछि होछि. सो जहा कहले सेटा ऑलरेडी लिखे देछि तो तमे ए कंडीशन मन रखिलो इक्वेशन जानलो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh बाय कोन हे गला 2 पाई. ओके
जो एठी देखो क्रॉस कर जाइछि दिस इज योर कोन आउट ऑफ फेज कंडीशन एठी such an orbit does not exist से कहला जो ठेमती क्रॉस कर जिवे एठी ऑर्बिट केबे रही परिबो नहीं दिस इज बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ angular momentum क्वांटाइजेशन माने n is equal to whole number कहतिली आ टिके पूर्वरु कहतिली mvr is equal to nh by 2 pi जति n टा तमर होल नंबर होची n is equal to 1 2 3 4 like this then it is called quantized. Angular momentum is quantized. This is called quantization condition. Okay. Both ends of the wave crosses each other. ठीक है अच्छा देखो से कहला if both ends of wave does not meet and cross each other then it does not follow 2 pi r is equal to n lambda condition then they are said to be out of phase. Such an orbit does not exist and thus we can say its angular momentum is not quantized. Clear? In the above picture, wave does not fit around the circular path. Okay, circumference of the circular orbit. Clear? देखो चलो जीवा न्यूमेरिकल एबे स्टार्ट हे गला तमरा प्रॉब्लम सेशन फर्स्ट प्रॉब्लम देखो what will be the wavelength of electron and football which travels with same 1/10 of the velocity of light if the mass of electron is 80 kg while that of football is 80 kg. अब अच्छा आंसर करिया सिंपल तुमको बात टिके कहि दउछ आराम से हे जो तुमको दीटा जिंस देछि गोटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देछि मास ऑफ फुटबॉल देछि सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज given as 9.11 into 10 to the power minus 28 gram. एठी फुटबॉल रो मास ऑफ फुटबॉल is given as 0.1 kg. ओके सो गोटे काम करले हबो एटा को भी केजी कर देले हे जिवो 9.11 into 10 to the power minus 31 kg हे जिवो ठीक अछि वर्तन देखा से कहै छी what will be the wavelength of electron which travels with same 1/10 of velocity of light. ठीक है अच्छा दीटा जाकर वेवलेंथ पचारछि ता माने तुमको लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन पचारछि लैम्डा ऑफ फुटबॉल पचारछि आसीबा अच्छा तुम कहबा सर फार्मूला तो थिला कोन लैम्डा इज इक्वल टू h by mv मास दीटा जाकर दे दैछि the mass of both particles is already given only amara kiye rahila velocity पे एठी ओटे hints देछि जे दीटा जाक सेम वेलोसिटी माने यार वेलोसिटी जति के तार भी वेलोसिटी जति के ठीक अछि केवल मास डिफरेंट अछि ताले से कहिछि वेलोसिटी केते देछि 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट माने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is given as 1/10 of velocity of light ता माने c 1/10 of velocity of light ला 3 into 10 to the power 8 meter per second ताले एटा हे गला 3 into 10 to the power 7 meter per second. Clear? प्रथम velocity of electron एटा velocity of electron is equal to velocity of football दीटा जाकर वैल्यू एति की तुमको
दे देइछि ओके वेलोसिटी जानिला मास जानिला लैम्डा काढी परियो नै लैम्डा इज इक्वल टू h by m v तो मास इलेक्ट्रॉन ପାଇଁ कोन पकेबी ए दिटा पकेबी फुटबॉल ପାଇଁ केते पकेबी एतिकी पकेबी हसीबा पे अरे हे परिबा सब कड़े गायब हे गला ଅଛୁ ସାର୍ ଅଛୁ। हम्म ସାର୍ ଟିକେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ରିପିଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। रिपीट कर देबे और ठीक ହଁ अछि देख सिंपल तुमको दीटा पार्टिकल देछि गोटे इलेक्ट्रॉन देछि गोटे फुटबॉल देछि ओके से कहछि यार लैम्डा ई माने लैम्डा कैलकुलेशन करिवा यार भी लैम्डा कैलकुलेशन करिवा तो लैम्डा रा फार्मूला कोन जानछे h by m v तो एठी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेबी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेबी लैम्डा यार केते हेजिबो h by मास ऑफ फुटबॉल velocity of football okay so h ର value ତ known ଅଛି h ର value କେତେ ଜାଣିଛେ h is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second हवा mass विषय से देइछि electron and football which travels अच्छा if the masses of electron is देखो mass of electron टा देइछि केते देइछि 9.11 into 10 to the power minus 28 ग्राम तो जेतेबेले मु याकू SI यूनिट रे रखिछि तो याकू भी SI यूनिट रे रखिबी ग्राम टा CGS यूनिट रो पाठ तो ताकू SI को आनिया को हेले केते कर देबी 10 to the power minus 31 kg 1000 रे डिवाइड कर दबो ओके वर्तमान मास ऑफ फुटबॉल टा देइछि 0.1 kg ता माने से ऑलरेडी SI रे देइछि और तम दीटा जाक SI यूनिट को चले आसिला तो मास दीटा जाक मिली गला h रो वैल्यू जानिछ केवल कोन हे गले तुम कर परिबो वेलोसिटी से वेलोसिटी पे गोटे हिंट्स देइछि व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फुटबॉल which travels with same 1/10 of velocity of light से गला दी जन जाक केते वेलोसिटी रे जाउचंती velocity of light रो 1/10 velocity of light टा केते 3 into 10 to the power 8 तार 1/10 माने केते कर देबी 1/10 तो इटा 10 टा कटि गले केते हिसिबो 3 into 10 to the power 7 ता माने तमे एबे सब तक वैल्यू पके परिबो लैम्डा ई केते हे जाउची देखा h जगह रे 6.626 into 10 to the power minus 34 हबा divided by केते करिवि 9.11 into 10 to the power केते अछि minus 31 into 3 into 10 to the power 7 मीटर सेकेंड ओके तो या को हिसाब करिवो जेति के आसीबो सेटा हे जिवो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन सेमते एपटे तीनटा जाक वैल्यू पकेइबो वेवलेंथ ऑफ फुटबॉल काढी क्लियर क्लियर सर। ओके लेट अस मूव फॉरवर्ड ये टिके फर्स्ट क्वेश्चन टा बोले टिके मु टिके कैलकुलेटिव दे देथिली एंट्रेंस रे एते कैलकुलेशन आ पडू नाही ठीक अछि अच्छा हमें केजी नै की करथिले से ग्राम नै की करछि जो थरे कले चले पाठ तो समान ठीक अछि
से ग्राम रे करछि बोले 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड रे करछि सेंटीमीटर पर सेकंड रे ओके देखिबा जो यूनिट रे पचारथिबा सेथरे करबा ओके एई क्वेश्चन टा करो नेक्स्ट टा करो अच्छा फुटबॉल रे भी काढिछि ए बड़ बड़ कैलकुलेशन अछि एते बड़ कैलकुलेशन आ एंट्रेंस रे पढ नाही खाली फास्ट प्रॉब्लम बोली मु दे देथिली अरे एटा को टिके परे करबा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आज थिला खाली तांको ना दिटा आस जाईछि ठीक अछि आहुरी तीन चारटा प्रॉब्लम थिला हां এই কোশ্চেনটা করো the ratio of wavelength of electron in hydrogen atom in third and fourth orbit क्वेश्चन लिखा आगो हवा एठी गोटे हिंट्स देछि पिले हिंट्स को यूज करके तमे करि परिबो जदि ट्राई करो हां तो मु कर देबी बट डेवलपमेंट पे टिके ट्राई करो से कहिछि रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट सपोज थर्ड टा को नहीं गला तमे लैम्डा 3 ओके फोर्थ टा को केते नहीं जो लैम्डा 4 एतिक था देखो एन लैम्डा तमरो थिला कोन एन लैम्डा आउ टिके पूर्व पढ़थि ना एन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर ओके ताहले मते को लैम्डा इज इक्वल टू केते हे जबो 2 पाई आर बाय एन माने लैम्डा और एन भितरे संपर्क कोन इनवर्सली प्रोपोर्शनल ताहले लैम्डा 3 बाय लैम्डा 4 मस्ट बी n is equal to n4 by n3 कौन पाई एमती कर पारथान तो अच्छा 1 by n3 by 1 by n4 कर परिबा अब n वैल्यू टा 3 और 4 पाई केते हे जिवो एटा हे गला n4 by n3 होनी हे जिवो हमें 3 4 संख्या नहीं जे से 2 1 नहीं जे की करछि आसीबा हे परिबा ए क्वेश्चन करा ये आहुरी वाला क्वेश्चन समस्त ए भले क्वेश्चन करिवा दरकार नले आगो को जाई परिबनी कष्ट पड़ जीवो linear momentum of a particle is increased by 4 fold अब linear momentum कहिछ देखा केते बढ़िया क्वेश्चन linear momentum माने p1 सपोज स्टार्टिंग रु p1 टा थिला p
फास्ट क्वेश्चन रो लाइन बाय लाइन डाटा एक्सट्रैक्ट कर linear momentum of a particle increased by 4 fold तामाने तमर linear momentum टा 4 गुना बढ़ी जाइछि तामाने स्टार्टिंग रे p1 टा केते नै गली p ताले p2 टा तुमको केते देला 4 times 4p एतिके बुझा पड़ला ए पर्यंत रो ओके Patan se कहछि what will be the wavelength of the particle having initial wavelength 200 nanometer तामाने से कहला initially lambda 1 थिला 200 nanometer हबा से कहछि फाइनली lambda 2 टा केते रहिबो एति कथा देख तम इक्वेशन सिखिथिला lambda is equal to h by p केते सिखिछ h by p क्लियर ताले एटा को यूज करबा ताले मु एथर लिख परिबी lambda 1 is equal to h by p1 and lambda 2 is equal to h by p2 ओके तांकर रिलेशनशिप पके दिया lambda 1 by lambda 2 is equal to h by p1 by h by p2 so lambda 1 by lambda 2 is equal to p2 by p1 ओके देखो lambda 1 टा तुमको देइथिला 200 नैनोमीटर lambda 2 टा बाहर करिवार अछि सो p2 टा पाइछ 4p this is 4p by p p cancelled eta कटि गले 50 so lambda 2 is equal to केते आछि 50 नैनोमीटर हबा देखला ऑप्शन रे अछि ऑप्शन रे अच्छा तुमको गोटे सिंपल टास्क देली सपोज ए इंक्रीज्ड बाय बदल रे देथांता डिक्रीज्ड बाय 4 folds ताले की कहि परिबो ए भीतर कोटा आंसर हबो की सेम क्वेश्चन सेटा खाली डिक्रीज्ड बाय अछि परमेश्वर साहू वेरी गुड सुश्री सिमरन गुड गुड जहाउ किछि किछि पिला एक्टिव अछंती देखा से कहथिला जति इंक्रीज 4 फोल्ड हेले 1/4 हे जाईची ताहले तमरो डिक्रीज बाय 4 फोल्ड हे गले इनटू 4 टाइम्स हे जब त 200 र केते गुण हे जब 4 टाइम्स से हे जब 800 नैनोमीटर ओके गुड एटा आसीबो if the velocity of hydrogen molecule is एतिकी velocity देइची इले केयरफुली यूनिट जगी थिबो सीजीएस यूनिट रे देइची मीटर रे देई नाही कोथरे देइची सेंटीमीटर पर सेकंड ता माने वेलोसिटी हमको कोथरे देला 5 into 10 to the power 4 centimeter second inverse then it's de-Broglie wavelength simple आउ मु एगुडा को कैलकुलेशन करले तम मान को लाज लागियो लैम्डा पचरछि हबा
V ଦେଇଛି mass of hydrogen ତମେ ଜାଣିଛ 2 ଗ୍ରାମ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିକି କେୟାରଫୁଲି ପକେଇବ ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଦେଇଛି ପିଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଟମ ଦେଇନି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଟମ ଦେଇଥିଲେ କେତେ ପକେଇଥାନ୍ତ 1 ଯଦି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଦେଇଛି କେତେ ପକେଇକି କରିବ 2 ଠିକ ଅଛି ଟିକେ ଖାଲି ସେତିକି ପାର୍ଟ ଜଗିବ ଆନ୍ସର କରିପାରିବ ଠିକ ଅଛି এটা স্ক্রিনশট ରଖିନିଅ ତମ ଟାସ୍କ ତମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିକି ଆମ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିବ ସେଥିରେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଦେଇଦବ ଠିକ ଅଛି କେବେ କେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛଟି ଆରେ ଗୀତ ନୁହଁ ପାଠ এইটা ଗୋଟେ क्वेश्चन ଦେଖ ଭଲ क्वेश्चन एंट्रेंस रे पढ़िथिबा क्वेश्चन नीट जेई बोथ रे क्वेश्चन पढ़ी सारिछि आगरु if the kinetic energy of an electron is increased by 4 times then the wavelength of de-Broglie wave associated with it would become देखो कहा विषय रे कहिछि काइनेटिक एनर्जी सो एठी तमरो इक्वेशन कोन अप्लाई हबो सेटा इंपोर्टेंट को इक्वेशन अप्लाई हि जिवो एटा लैम्डा इज इक्वल टू h by 2m kinetic energy root over ओके से कोन कहिछि देखो initially kinetic energy suppose kinetic energy 1 is equal to E नेगली ठीक अछि kinetic energy of in electron increased 4 times ता माने kinetic energy 2 is equal to 4E प्रथम लाइन रो एतिकी डाटा पाई गली एबे lambda 1 ता केते हिजिवो lambda 1 is equal to h by केते करबी root over of 2m e kinetic energy 1 जगह रे केते पके देबी एंत लिखि दोछि kinetic energy 1 तो एटा हे गला h by root over of 2m e ओके अर्थात देखो lambda 2 केते हे जाइथिबो h by root over of 2m kinetic energy 2 so this is giving you h by root over of 2m ए जगह रे केते पकेबी 4e ए 4 टा को खाली रूट ओवर बाहर को नहीं आसीबी सो इट इज गिविंग यू h by 2 root over of 2me हबा बतन देटा जाकर रेशियो नहीं जाओ lambda 2 by lambda 1 is equal to h by 2 root over of 2me divided by h by root over of 2me तो ये कैंसिल केवल रहिबो केते lambda 2 by lambda 1 is equal to 1 by 2 ठीक रे देखो से तुमको lambda 2 पचारिछि पिला इठु कहि देबे 2 टाइम्स इंक्रीजेस ना ठीक रे देखिबो तुमको पचारिछि lambda 2 so lambda 2 is equal to lambda 1 by 2 ताने जहा थिबो सेटा कोन हे जाईछि हाफ 2 टाइम्स पिला मार दियंती भूल हे जिवो कोन हे जाइथिबो हाफ ओके क्लियर आकु जिबा से डायरेक्ट कर देछि मु डिटेल्स रे तुम करके देखे देली
ତମେ ଏଇଟା ନିଜେ କରିପାରିବ। if E is the kinetic energy ବଦଳରେ E ନେଇଛି, ସେ କହିଛି correct expression for de-Broglie wave। ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ଏଟା ପା ଏବେ କରି ଗଲା, ଏଇଟା ଅପସନ ସି। ଅପସନ ସି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିକି ରଖ, ଆପଣ ମାନେ କରିକି ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ଆମେ ଯିବା ଅନସର୍ଟନିଟି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ପାଖକୁ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରୁ ପଡୁଛି, ଦେଖିଦିଅ। ହେଇଯିବ ପିଲେ? ये देखो जेई रे गोटे क्वेश्चन पडिछि, वेवलेंथ ଦେଇଛି, ମାस ଦେଇଛି, डायरेक्टली तमे फार्मूला पकई काढिबो, आसीबो। काढी भी ଦେଇଛି, ଦେଖେଇ ଦଉଛି सिंपली। देखो h लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv, एती वैल्यू पकेइला, सब पकेइ देला। ठीक अछि, सब तक तो एसआई यूनिट रे ଦେଇଛି ଆଉ कोन। हाँ एसआई देनी, एटा अछि कोथरे ग्राम रे, आ कोठी के करबो केजी, केजी करिके पका है 10 टू द पावर -3 केजी। चेक करछ यूनिट जगिचे इज इक्वल टू 10 टू द पावर -33, एटा हेतिबो आंसर हला। सहज पाठ दउची पूरा कटि जीवो, 6.63 जहा एटा को पूरा कैंसिल कर दबो, उड़ै दबो। ठीक अछि, आसीबो। सेटा थिला केते केजी गोटे, एटा खाली मास ता चेंज हेछि। आसीबो, कार नेछि, कार नेछि बोली देखो केते स्मॉल वैल्यू आसुची लैम्डा। हे परिबा सुनो, तर हे करिया दरकार नाही। यार पीडीएफ टा सार को मु कहबी ग्रुप पे शेयर कर देबे, से थ्रू क्वेश्चन देखिबो, बसी बसी निजे कैलकुलेट करिवो। वंस कैलकुलेशन डन, देन योर थिंग्स विल बी मोर क्लियर। ओके, बहुत सारा क्वेश्चन अछि। ठीक अछि, ଆମେ ଟିକେ ଆକୁ ପଳେଇବା, ନହେଲେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। फिफ्थ ऑर्बिट एटा कहि परियोनी, एटा सहजटा अछि, जल्दी जल्दी कहलो। एंगुलर मोमेंटम रा फार्मूला जानिଛ केते, mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई। से कहछि फिफ्थ ऑर्बिट माने n टा केते पके दबो 5, ताले एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 5h बाय 2 पाई, 5h बाय 2 पाई। आंसर केते आसीबो होची? अरे हबो,
नेक्स्ट पार्ट हला तमरो टिके सुनि जा तापरे हम जीव तम ब्रेक रे तापरे पढे ठीक अछि वर्तमान पाठ कहला ठीक अछि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और मेसेज आसी छी यस ओ ठीक अछि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कोन कहला ना देख तमे जदि केबे घंटा घंटा देखुथो देख वर्तमान टाइम हिची 8:50 8:55 सेकंड है जतिक बेले कहली 5 सेकंड से तळे से 5 नहीं हे गलानी 7 सेकंड मान 2 सेकंड ता भीतर पळैला तो तमे जेबे भी टाइम कहिबा को चाहिबो यू कैन नॉट से द एग्जैक्ट टाइम बिकॉज़ टाइम इज रनिंग ओके तो एग्जैक्टली से या हुए इलेक्ट्रॉन केस रे कोन हला जति इलेक्ट्रॉन ता गोटे सर्कुलर ऑर्बिट रे बुलुछ सर्कुलर ऑर्बिट रे बुलुची मु जति कहिबी मु ताकू एठी देखि पारिबी नहीं काहे कि से देखिबा टाइम रे से एम्ति मूव कर जाइथिबो तमे जो पोजीशन रे देखथिलो ता पोजीशन चेंज हो जिवो बिकॉज़ इट हैज सम वेलोसिटी ओके सो हाइजेनबर्ग सेही जिंसटा को कहिले जे आमे इलेक्ट्रॉन खोजिले एटम रे पाउना ए पर्यंत एटॉमिक स्ट्रक्चर रे कोन चलीची इलेक्ट्रॉन टा कोठी अछि ता पोजीशन कोठी सेटा खोजा चलीची तो से कहला इलेक्ट्रॉन टा मिलु नाही काहे कि ता यार मोशन अछि ता माने तार किछि वेलोसिटी अछि हबा आ तार पोजीशन टा हैला सपोज पोजीशन को लिखले x ठीक अछि ता माने ठीक रे सुन when velocity जतबेले 0 करिवो सेतबेले तमे पोजीशन रा वैल्यू पाइबो ठीक अछि जेतबेले तमे पोजीशन को 0 करि परिबो माने पोजीशन विषय रे चिंता करिवो नाही से कोठी रहला हमर जायस नाही सेतबेले वेलोसिटी तमे कैलकुलेट कर परिबो ठीक अछि जेतबेले पोजीशन देखिबी सेतबेले वेलोसिटी देखिबी नाही जेतबेले वेलोसिटी देखिबी सेतबेले पोजीशन देखिबी नाही ता हेले तमे एक्यूरेटली तार पोजीशन आ वेलोसिटी काढी परिबो क्लियर तो एई जिंसटा हाइजेनबर्ग कहिले कोन कहिले ना एट ए टाइम simultaneously position and momentum position एटा वेलोसिटी अछि थरे ओटा मास मल्टीप्लाई कर देले ये कोन हे जिवो मोमेंटम से कहले at a time or simultaneously position and momentum of electron cannot be calculated accurately okay position and momentum of electron cannot be calculated accurately clear से कहले एका संगरे दीटा जाकू कैलकुलेट कर परिबो नाही जदी एका संगरे कैलकुलेट करिवो सेथरे किछि अनसर्टेनिटी बा एरर रहि जिवो अनसर्टेनिटी माने ओडिया रे हम ता कहंती अनिर्दिष्टता तमे डेफिनेटली ताकू गोटे जगह रे पाई परिबो नाही क्लियर तो से जिंसटा से इक्वेशन आकार रे भी कहिले जे केते अनसर्टेनिटी रहिबो तार गोटे डेरिवेशन देइथिले से ठीक अछि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कोन कहला द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज द consequence of dual behavior of matter and radiation it is due to the dual nature of light or radiation it states that it is impossible to determine simultaneously important hela simultaneously the exact position and exact momentum or velocity of a fast moving particle like electron भली जो गुडा को बहुत हाई स्पीड रे बुलुचंती तांकर एग्जैक्ट पोजीशन आ मोमेंटम काढिबा बहुत ही कष्ट हबा सेथरे केबे भी तो बाहरी परियोनी इट इज इम्पॉसिबल ठीक अछि ठीक है देखो मैथमेटिकली से कौन कहले डेल्टा एक्स एटा हला अनसर्टेनिटी इन
uncertainty in your position. This is uncertainty in momentum. Yankar product multiplication टा must be greater than equals to h by 4 pi. କେତେ ହେଇଯିବ h by 4 pi ସହିତ ଆଇଦର ସବୁବେଳେ ସମାନ ହବ ନହେଲେ ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ହବ। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମୋମେଣ୍ଟମ ଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିଦେଇ ପାରିବା ରେ ମାସ୍ ଇନଟୁ ଭେଲୋସିଟି। ଦେଖ ଆକ୍ଚୁअली ଏମିତି କରିଦେଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ତମେ ଜାଣିଛ uncertainty in position is delta x, uncertainty in momentum is ଏତିକି h by 4 pi। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା କି delta x into delta of mass into velocity. Okay, mass into velocity. So this is giving you delta x. ये देखो mass टा केबे चेंज ही परिबनी, mass टा तो पार्टिकुलर फिक्स अछि ना, तो ता कांस्टेंट बोली कोन करली बाहर को नहीं आसिले m into कोन हे जीवो डेल्टा v। ठीक अछि h by 4 pi greater than equals to h by 4 pi। ताले मते को डेल्टा x into डेल्टा v is greater than equals to h by 4 pi m। हबा दीटा एक्सप्रेशन एठी लिखिचे जदि तुमको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ मोमेंटम देथिबो h by 4 pi पकेबो, यदि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी देथिबो h by 4 pi m पकेबो। ठीक अछि delta x is the uncertainty in position, delta p is the uncertainty in momentum, delta v is the uncertainty in velocity of the particle. If the position of an electron is known with high degree of accuracy, delta x is very small. यदि position टा पूरा 100% है गला ताले delta x केते आसीबो 0। यदि 99% है delta x केते आसीबो 1%। and the velocity of electron will be of large uncertainty। देखो गोटे रे certainty आनले आ गोटे रे uncertainty बढ़ी जीवो। ठीक अछि जोटा कहउथिली पोजीशन काढला बेले वेलोसिटी टा 0 करिया को पड़िबो, वेलोसिटी काढला बेले पोजीशन कथा भूली जिवा को पड़िबो। ठीक अछि उल्टा टा भी से आहे जिवो। If one determines the position of electron accurately, that is delta x is equal to 0, then delta v or delta p reaches कौन है जीवो infinity। ठीक अछि देखो ना डेल्टा x टा 0 हेले डेल्टा v टा केते आछि इंफिनिटी। सेमती डेल्टा x टा काढिबो जदि डेल्टा v टा को 0 पकई के से भी केते आछि इंफिनिटी। हबा this is possible only for electromagnetic radiation, light with smaller wavelength and that of electron should be used to know the position of or momentum। हला एति जिंस थिला केवल सेति देखिले हे जिवो। एबे तमे तार प्रॉब्लम कर परिबो सिग्निफिकेंस। ये एबे विशेष दरकार नहीं, एटा ऑलरेडी पढ़ी सारिछ सेही जो लिखिथिले सेही गुडा कहीं लिखा हैछि। अच्छा गोटे काम करो त माने 5 मिनिट ब्रेक नै जा तापरे आसी के ए प्रॉब्लम रो स्टार्ट करियो। ओके after 5 minutes we will be continuing।
ओके वेलकम बैक जो माने अच्छा थैंक यू जो माने न अच्छा से माने जल्दी जल्दी पळै आसा ठीक अछि लेट अस कंटिन्यू से कहिछि ए गोल्फ बॉल हैज mass 40 gram a golf ball has mass 40 gram and moves with a speed of 45 meter per second if the speed can be measured with a accuracy of 2%. Calculate the uncertainty in the position. देखो से कहला uncertainty in speed केते परसेंट से देछि 2%. ताने तम स्पीड ता केते थिला 45 मीटर पर सेकंड तार 2% ता हबो कोन uncertainty ताले केते करबी 2 by 100 2% माने 2 by 100 तो एटा केते आसिला 0.9 मीटर पर सेकंड प्रथमे तम डेल्टा v टा काढी देला मास टा देछि ग्राम रे ठीक अछि मास टा को केजी को कर परिबो हबा अनसर्ट एटा तो फार्मूला जान थिला ना देखो फार्मूला कोन थिला डेल्टा x इनटू वेलोसिटी देछि ता माने डेल्टा v वाला पके इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू केते हेतिबो h by 4 pi m 4 जानिचो पाई जानिचो m टा देछि h भी जानिचो डेल्टा x काढी देला ए सॉरी डेल्टा x टा काढीबार अछि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एटा ऑलरेडी काढी सरछ 0.9 या को आनिबो एपटे डिवाइड कर दो हे एति के ही फार्मूला हबा अरे हेबो h जगह रे पकेली 4 को 4 पाई हला 3.141 डेल्टा भीटा हला 0.9 मास्टर देछि 40 ग्राम ग्राम को इनटू 10 टू द पावर -3 कले कोन हे गला केजी एबे सिंपली हिसाब करतो हेला अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एतिके मीटर क्लियर an iron ball has a mass of 35 gram and speed of etiki if this can be measured if the if the speed can be measured with accuracy of 2%. एटा भी से भले हे जिवो ऑप्शन देछि बाछिबार अछि कर जिवो आसीबा तामाने डेल्टा v टा आसी जिवो 50 into 2 by 100 एटा हे जाउची 1 मीटर पर सेकंड ओके डेल्टा v मिले गला मास टा देछि 35 ग्राम is equal to 35 into 10 to the power -3 kg ready बाहर करिवार अछि डेल्टा x is equal to h by 4 pi m डेल्टा v एतिके पके दबो ठीक अछि देखो सॉल्यूशन करी भी देछि टाइम बचे पे डेल्टा x into डेल्टा v is equal to h by 4 pi m तो डेल्टा x is equal to h by 4 pi m डेल्टा v पके देली वैल्यू पकेली ना ऐसे होला 35 into 10 to the power -1 करछि डेल्टा v टा 1 पकेछि आजीबो डेल्टा v टा 1 केमिति आनिछि डेल्टा v रो कैलकुलेशन 100% रे केते रहउछि 50 मीटर पर सेकंड 2% रे केते रहइबो एति 1 मीटर पर सेकंड
आंसर सी टा थिला तमरा आंसर. If the uncertainty in velocity of two particles A and B are एतिकी and एतिकी, से uncertainty in velocity ता माने तुमको गोटे दे देला डेल्टा V1 और डेल्टा V2 ए दुटा दे देछि. The ratio of uncertainty in position रेशियो नहीं जो एटा डेल्टा x1 by डेल्टा x2 is equal to केते हे जाइथिबा h by 4 pi m डेल्टा v1 by h by 4 pi m डेल्टा v2. ओके ताले एथिरु पाई परला डेल्टा x1 by डेल्टा x2 डेल्टा x2 is equals to कौन है जाइथिबा को डेल्टा v2 by डेल्टा v1 हबा ताले तुमको मास भी देछि. अच्छा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी एटा गोटे देछि एटा गोटे देछि पके दबो सेठी एपटार रेशियो काट दबो लिखि दिया ऑप्शन लिखि दिया हे जिवो लिखि देले हबो गोटे देछि केते डेल्टा v2 टा देछि 10 to the power minus 31 एटा देछि 10 to the power minus 27 एटा रहिबो 10 to the power minus 4 by 1 एटा है जो 1 by 10 to the power 4 एतिकी एटा हबो आंसर. बुझी option D is the correct answer. Clear? अरे मु आगे कर दोछि तापर आंसर टा देखोछि सो दैट दी थरा देखिला तुम जानि परिबो जे केमति करा हुए नले कह सर दी थरा uncertainty in the position of an electron mass टा ब्रैकेट रे दे देछि moving with a velocity v टा दे देला accurate up to 80% माने प्रथम डेल्टा v काढिबो 300 into 0.001 by 100 करके डेल्टा v काढिबो डेल्टा x टा तापर करिबो अछिबा. अरे हबो कि अच्छा टिके हां नहीं खाली हेई परिबो न हेई परिबो किछि त कहि दियो तो माने सिना टिके इंटरैक्टिव हन त केते क्वेश्चन कलेक्शन करिक देछि हो ठीक अछि. अच्छा चलो जीवा में कहा पाखकु स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन बा तमरा जोटा क्वांटम नंबर रा पाठ ये गोटे क्वेश्चन थिला या पर अछि क्वांटम नंबर. ओके जहाँ एते समय पर के जने परमेश्वर यस करचंती. ओके ठीक अछि धन्यवाद थैंक यू वेलकम. चलो आगो को चलीबा. बर्तमान पाठ आसिला तमरा स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन. अच्छा स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन कोन पय पढिबा वी आर गोइंग टू सी द
क्वांटम नंबर्स कौन पढ़िबार अछि क्वांटम नंबर्स क्वांटम नंबर कौन दिए ना एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन in address of electron in an atom गोटे atom रे address of electron where you can find one electron ठीक अच्छे तो एथिरे प्रथमे क्वांटम नंबर्स जानि था चारि प्रकार रो क्वांटम नंबर्स आर 4 टाइप्स आकु पढ़िबा बट आगुआ कहि देली काहेकि ना सेथर 4 टाइप क्वांटम नंबर रो तीनटा क्वांटम नंबर मिले किछि इक्वेशन रू ठीक अछि से टिके हायर लेवल पाठ किंतु जानि था से माने साधा साधा जिंस नहंती से माने इक्वेशन रू मिले आ गुटे क्वांटम नंबर केवल ता स्पिन रू मिले ठीक अछि तो प्रथमे जो तीनटा इक्वेशन रू मिले से को इक्वेशन रू मिले ना जो इक्वेशन को कहा जाए स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन हबा ए इक्वेशन आसीथिला अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जोगु काहेकि ना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रे आउ टिके पूर्व त माने डिस्कशन करथिला गोटे इलेक्ट्रॉन रो पोजीशन आ मोमेंटम एट ए टाइम हमें पाई परिबा नाही तेणु करे से कोठी रहुची को जगह रे सेटा के हमें पाई परिबा नाही सेथि पई गोटे टर्म आसिला प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कौन कहली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन माने को एरिया रे इलेक्ट्रॉन टा तुमको मिली परिबो गोटे पॉइंट रे न खोजी गोटे सर्टेन एरिया रे खोजिले ठीक अछि तो सेटा जो एरिया देला सेटा ही ई इक्वेशन वासे ताको कह जाय कोन स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन हबो आखरी भी पाठ कहे इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लाइक ए वेव सो तार गोटे वेव रो इक्वेशन आसीबो से वेव इक्वेशन टा को ही आमे कहंती तार वेव फंक्शन और कोन कहंती वेव इक्वेशन ठीक है सेठी देखो गोटे साई लिखा है साई इज द वेव फंक्शन ए वेव आकार से जो मूव करूची तार इक्वेशन टा को ही कहंती साई ओके आहुरी ता विषय डिटेल्स रे परे परे पढिबा आगु किंतु एबे पई जान था स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन इज इक्वल टू d square psi by dx square देखो था एठी लिखा है d square psi by dx square d square psi by dy square d square psi by dz square plus 8 pi square m h square e minus b टिके ध्यान रे लक्ष्य करिवो ए गोटे इक्वेशन खाली जानी था यार डेरिवेशन तम लेवल रे दरकार नाही दया करे बेसी कष्ट करिवानी एतिक रे तमरो हेइ जिवो कोनोसी भी एंट्रेंस रो क्वेश्चन मिली जिवो जति जति को हाउची सेति जस्ट बुझी गले हेइ जिवो ठीक अछि देखो ए गुडा करे x y z टर्म अछि ता माने तम पाखरे तीनटा एक्सिस अछि गोटे x y आउ z एक्सिस दोज आर कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दोज आर कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ओके वर्तमान एठी देखो गोटे मास लिखाई छि दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m टा कोन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक अछि वर्तमान एठी गोटे टर्म अछि देखो e minus v e is the total energy e टा होछि तमरा देखो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन v टा होछि पोटेंशियल एनर्जी ताले मते के कहि परिबो e minus v टर्म टा तुमको कोन दबो एटा हला टोटल एनर्जी minus potential energy will give you the kinetic energy of electron हबा the total energy minus potential energy will give you the kinetic energy of electron very good this will give you the kinetic energy जहा ठीक अछि सुनो बर्तमान हम जानले एथरे गोटे काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व अछि क्वेश्चन हला एथरो हमको कोन मिले मन रखिथिबो एथरे केतेटा कोऑर्डिनेट अछि x y z ठीक अछि या पर स्लाइड रे म तुमको टिके देखौची ई जो x y z को कहंती कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ओके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जेतबेले तमरो तीनटा वैल्यू दे परिबे
अच्छा देखो देखो एठी से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x y z एक्सिस को कन्वर्ट करा हेची x टा को अणा हेची r sin थीटा cos phi ठीक रे देखो था sin थीटा टा कोठी अछि ना एठी गोटे तमरो पार्टिकल रखा हेची से 3 डायमेंशनल स्पेस एठी अछि सपोज पार्टिकल एठी अछि एटा x एक्सिस एटा y एक्सिस एटा z एक्सिस एमिति अछि ठीक अछि एथिरे तमरो तार किछि x कोऑर्डिनेट रहिबो किछि x कोऑर्डिनेट रहिबो किछि y कोऑर्डिनेट रहिबो किछि z कोऑर्डिनेट रहिबो तीनटा जाका को डिस्टेंस r एंगल थीटा एंड फाई टर्म रे रिप्रेजेंट करा हेछि हबा केवल तम माननको एतिकी जानिबार अछि ठीक रे सुनो x y z को कहा जाए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट r थीटा फाई एमानको कहा जाए पोलर कोऑर्डिनेट्स कौन कहा जाए पोलर कोऑर्डिनेट्स सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स can be represented in terms of polar coordinates ओके केवल गोटे लाइन तमरा एथरो जानिबार अछि ठीक अछि तो एतिकी जानले तमे आगो को बढ़ी परिबो ए इक्वेशन जे मन रखिला ठीक अछि न मन रखिले किछ असुविधा नै आगो को कोन करिवार अछि से जिंस कहली ठीक अछि तो वर्तमान पाठ कहिला जदि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करा जाए x y z टर्म रे तार तीनटा वैल्यू मिली थांता इक्वेशन सॉल्व करे अननोन वेरिएबल्स गुडा को मिलिबे ठीक अछि तो सेमिति तमे जेतबेले ताको पोलर कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट कर दबो ताको जेतबेले सॉल्यूशन करिवो इट विल गिव यू 3 क्वांटम नंबर्स इन टर्म्स ऑफ r थीटा फाई बुझेला एबे क्वांटम नंबर्स ताले को कोऑर्डिनेट्स रो आसीची ना पोलर कोऑर्डिनेट्स रो पोलर कोऑर्डिनेट रो आसीची कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रो ता माने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन रे थिबा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स are converted to your polar coordinate then on solving them you are getting your quantum numbers this much you must know okay ना एतिकरे कहार असुविधा रहिला कहि कर कोठी कन्वर्ट करछे ताको पोलर कोऑर्डिनेट रा सॉल्यूशन बाहर कले it will give you the quantum numbers okay ठीक है तो देखा तो क्वांटम नंबर साइड को जाउचे तो पाठ कहिला r थीटा फाई को जदी सॉल्व करूचे अच्छा एबे टिके हिंट्स दे दोची तापर हम डायरेक्ट क्वांटम नंबर को एंटर करजिबा ठीक अछि एथिरे गोटे पार्ट रहिला रेडियस जदी वेव फंक्शन को रेडियस टर्म रे रिप्रेजेंट करूची ताको हमें कहू रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन हबा एथिरु को क्वांटम नंबर मिलिबो ना दीटा क्वांटम नंबर अच्छा क्वांटम नंबर चारिटा ना एबे टिके कहूची आ टिके डिटेल्स रे पढिबा प्रथम क्वांटम नंबर आसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ठीक अछि नेक्स्ट आसीबो अजीमुथल क्वांटम नंबर ठीक अछि यार सिंबल हैला स्मॉल n यार सिंबल हैला स्मॉल l तापरे आसीबो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओके तो एटा आसी जीवो m लास्ट आसे स्पिन क्वांटम नंबर यार वैल्यू आसी सिंबल आसीला s मन रखिथिबो ए फर्स्ट तीनटा क्वांटम नंबर आर फ्रॉम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक गोटे केवल स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन नु मिले नहीं ए तीनटा जाका सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन नु मिले स्पेशली देखो फर्स्ट अछि n एंड l ठीक अछि इस रेडियल वेव फंक्शन रो कहार वैल्यू मिलुची n एंड l ठीक अछि एंगुलर देखो थीटा एंड फाई आर एंगल्स आ टिके पूर्व देखो थिले थीटा और फाई कोन थिला एंगल्स तो theta and phi gives you the azimuthal and magnetic quantum numbers okay this is called angular part of wave function एति पर्यंत क्लियर अछि हो ताले क्वांटम नंबर केतेटा आसिला चारिटा
principal azimuthal magnetic spin. Principal symbol N, azimuthal small l, magnetic small m, spin S. Okay. Principal azimuthal magnetic are from Schrodinger wave equation in polar form. The radial part psi r gives you the NL value. The angular part gives you the uh, azimuthal and magnetic means L and M value. Clear? ঠিক আছে? So like psi responds to atomic orbital. ঠিক আছে? দেখো characteristics of characterized by a set of quantum number. First three quantum numbers n, l, m were derived from Schrodinger equation. The spin quantum number added later. হবা? তো দেখো n principal azimuthal magnetic are from কোঠু Schrodinger wave equation. স্পিনটা পরে আড ହେଲା। ঠিক আছে? ଦେଖ ଆଗରୁ ଆମେ ଖୋଜୁଥିଲେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟିର ମାନେ କଣ? ଠିକ ଅଛି? ଆଗରୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଟା ଏଇ ସାର୍କୁଲାର ପାଥରେ, ଏଠି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ରହିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଟା ଏଇ ସାର୍କୁଲାର ପାଥରେ ବୁଲୁଛି। ସେ କହିଲା ନା, ଏ ସାର୍କୁଲାର ପାଥରେ ବୁଲୁଛି ମାନେ ତାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଛି ଏଇଠୁ ଏଇ ଭିତର ଏରିଆରେ କୋଉଠି ବି ସେ ଥିବ। This is the three-dimensional region around the nucleus. ଏଠି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ରହିଲେ ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ three-dimensional area, two-dimensional ନୁହଁ। ଆଗରୁ ଏଇଟା ଥିଲା ଅର୍ବିଟ ଟା two-dimensional concept ଥିଲା। ଏବେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ ସବୁ କଣ ହେଇଯାଇଛି? three-dimensional concept। କଣ ପାଇଁ? x, y, z ତିନିଟା axis, ତିନିଟା dimension ଦଉଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି? So ଦେଖ କଣ କହିଲା? Set of four quantum numbers required to define electron in an atom completely. ଦେଖ ତମେ କହିବ ସାର୍ ତିନିଟା ଇକ୍ୱେସନ ମିଳିଥିଲେ ସ୍ପିନ୍ ଟାକୁ ଛାଡିଦବା ନା, ଚାରିଟା ଯାକ ମିଶିଲେ perfect address of electron ମିଳିବ। Four quantum numbers will give you the exact location or exact position of an electron or probability of finding an electron in an atom. ଗୋଟେ atom ରେ ସେ ଦବ ତାର probability or position of an electron. Okay? So ଦେଖ ଚାରିଟା quantum number କିଏ କିଏ ଆସିଲେ? Now, first one is your principal quantum number. Second one is your azimuthal quantum number. Third one is your magnetic quantum number. Fourth one is your spin quantum number. Clear? Let us see one by one. Okay. So, first one is your principal quantum number. ठीक है? A symbol कौन? N. A symbol कौन? Small n. ठीक है? देखो कौन कहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? इट वाज प्रपोज्ड बाय नेल्स बोर। बोर्स रेडियस रे तमे ताको पढिछ जोटा n वैल्यू आमे लेखंती। n इज द पॉजिटिव इंटीजर विथ वैल्यूज 1 2 3 4। अच्छा गोटे क्वेश्चन पचारे, कैन n बी 0? Can n be 0? No, because why କିଏ କହିପାରିବ? नो କହିଲ, why no? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେଲି। ପିଲେ ଆମର नो କଲେ ମୁଁ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ପକେଇଦେଲି। କିଏ କହିପାରିବ ଯେ why? ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ରେ କିଏ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ?
नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ता 0 हे गला सुविधा कोन हो सुना ठीक है जे n belongs to number of orbitals but better term रे तमे कहि परिबो सो देखो एठी न्यूक्लियस रहिला तो n टा 1 हेले एटा फर्स्ट ऑर्बिट आसी 0 हेले इलेक्ट्रॉन टा आसी कोठी पहुंच जीवो न्यूक्लियस रे ता माने जोटा ट्रबल थिला बोर्स मॉडल पूर्वरु इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड इन न्यूक्लियस atom will be destroyed means atom will not be stable से कंडीशन आसी जीवो माने अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम द न्यूक्लियस रे इलेक्ट्रॉन रही परिबो नाही यार माने हैला n not equals to 0 काहे कह जे because electron cannot reside in nucleus होबा जोटा लिखिला के इट इज ऑर्बिटल ऑर्बिटल ता आसे न्यूक्लियस परे तन करी इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड इन न्यूक्लियस ए गुडा का ऑप्शन रे दोची सेति पय मो से लाइन गुडा को कहि देली ठीक अछि ओके लेट अस गो फॉरवर्ड ठीक अछि एथर बहुत इंफॉर्मेशन मिले it determines the size of the radius or cell or principal energy level by a equation पढ़िचा बोर्स एटॉमिक मॉडल रे पढ़िचा rn is equal to 0.529 angstrom into कहते हेतला n square by z ओके और अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन सुविधा पाए हमें कहते नहीं जानती 0.53 एंगस्ट्रॉम इनटू n स्क्वायर बाय z हवा देखो एथिरु rn is directly proportional to n square with increase in n value rn value increases you must have calculated that one हाइड्रोजन रा और हाइड्रोजन एटम रे z केते आसी जाए 1 z केते आसे 1 सो रेडियस 1 r1 is equal to 0.53 angstrom into 1 square by 1 it is coming as 0.53 angstrom okay so r2 is equal to 0.53 angstrom into 2 square by 1 is equal to it is coming as 2.12 angstrom if you are going for r3 then 0.53 angstrom into 3 square by 1 is equal to it is giving you 4.77 angstrom so you can see gradually the value of rn increases देखा r1 r2 r3 बड़ किए हे गला एगा इठो देखा जाउची r1 is less than r2 greater than less than r3 question पचारे what is the ratio of r1 is to r2 is to r3 केते के कहि परियो सामना रे देखा जाउची this is equals to n1 square is to n2 square is to n3 square तो एटा हे जो 1 square is to 2 square is to 3 square onwards so answer will be 1 is to 4 is to 9 very good okay clear देखा next कौन कही it determines the energy of the orbit or cell or principal energy level okay energy रा फार्मूला भी जानछ एनर्जी फार्मूला जानना देखा केते एनर्जी फार्मूला कहला इलेक्ट्रॉन वोल्ट in terms of electron volt
देख केते हे जाउची E n is equal to minus 13.6 electron volt into z square by n square ठीक अच्छे देख ये माइनस साइन अच्छी बहुत इम्पोर्टेंट माइनस साइन अच्छी सेथि पई with increase in n value with increase in n value en also increases does not decreases very good अरे वाह तमे तो प्रॉम्प्ट अच्छा टाइपिंग रे भी बहुत टाइम बधे मोबाइल चले तो छ हाउ ठीक अछि पाठ ପାଇଁ चलो भलो ठीक अछि सो n increases en increases हम जदि चेक करिवो for hydrogen atom केते हे जाय थाय z is equal to 1 implies z square is equal to केते आसीबो 1 ताले e1 will be minus 13.6 into 1 square by 1 square it is giving you minus 13.6 electron volt okay what about e2 e2 is minus 13.6 into 1 square by 2 square so it is coming as you can see minus 13.6 by 4 that is giving you 3.4 electron volt am I right E3 is equal to minus 13.6 into 1 square by 3 square. It is giving you minus 1.51 electron volt. If you can see here, the value of E1 is less than E2 is less than E3. Can you say the ratio between E1, E2 and E3? Options are given. Options are given. A रे देछि 1:2:3 B रे देछि 1:4:9 C रे देछि 1:1/4:1/9 D रे देछि कहि परिबो तम माने किए let us see को माने कर देछ very good with a minus of good JEE दबा it लिखा है NEET and JEE aspirants of class 11 JEE दबा बाबू माने आपण परमेश्वर बाबू JEE रे मल्टीपल ऑप्शन भी करेक्ट थाए ठीक है सेटा को जगिबो म जानि थिली तुमको आसीबो तमे सी मारिबो आउ जे भी करथिबे से माने भी सी मारिबे केयरफुल ठीक करिच मना करने ठीक न बोली ऑब्वियसली एथिरो रेशियो न बजदी एठी केते रहिबो यार रेशियो आसीबो इज इक्वल टू 1 by 1 square 1 by 2 square 1 by 3 square so it is giving you 1:1 by 4 is to 1 by 9 but या LCM केते हे जीवा 36 मल्टीप्लाई कर दियो 36 रे तो एटा भी ऑप्शन हबो ना नहीं तो ये ऑप्शन को थरे अछि सी ये ऑप्शन को थरे अछि डी तुमको केतेटा ऑप्शन टिक करिया को पड़िबो दीटा न हले हैरा हुआ क्लियर अछि अरे हबो गुड let us move forward
n values are 1, 2, 3, 4. It cannot be 0. So next, the number of electrons in an orbit. But orbit रे number of electrons केते रहिबे 2n square. देखो या जोगु n is equal to 1 हेले तमे जानी थिलो ऑर्बिट बा सेल कहंती. अच्छा सेल गुडा को ना रे जानिछ स्कूल टाइम रो के n is equal to 1 means it is k cell. So k cell will have 2n square electrons. is सहित orbital भी कहि दउची. Orbital number of orbitals is equal to n square. So it will be giving you n square orbitals. एटा electron एटा orbitals. ठीक अछि देखा k cell रे केतेटा इलेक्ट्रॉन रहिबे आगो n square करथिले हेथांता. ठीक अछि 1 ra square it is giving you 1 orbital. Number of electrons will be 2 into 1 square. It is giving you 2 electron. First cell can have 2 electron. N is equal to 2. This is L cell. It will give you 2 square orbitals. That is 4 orbitals. 4 orbitals can have 2 into 2 square. That is 8 electrons. In second cell K cell you can have 8 electrons. Okay, in n is equal to 3 and this is called M cell. This will give you 3 square is equal to 9 electrons. This is 2 into 3 square is equal to 18 electrons you can have in third cell. 9 orbitals, 18 electrons. Like this you can go on finding for n is equal to 4, n is equal to 5. I think you can do it. Okay, let us see. These are the values. N is equal to number of orbitals is n square, number of electrons is equal to 2n square. K cell has a n value 1, number of electrons already calculated. Fourth cell will have 16 orbitals, 32 electrons. Fifth cell O cell will have 25 orbitals, 50 electrons. Then comes the 72 electrons. Okay, you can take a screenshot of this one also. Okay, let us see. As the n value increases, size of orbital increases. Okay. As the n value increases, size of orbit increases. As the n value increases, energy also increases. Angular momentum is given by mvr is equal to nh by 2 pi. As it both thara kar salary. Eta already karthile bodhe. According to Bohr's theory, angular momentum of an electron in fifth orbit. Enda kete de dechi fifth orbit. N is equal to 5. So mvr is equal to 5 into h by 2 pi. So it is giving you 2.5 h by pi. So this must be the answer. Okay. The radius of Bohr's first orbit h is this much nanometer. Radius of second orbit of HE. एथरे गोटे जिनस z दरकार हबो देखा रेडियस rn is equal to हमर कोन हे जे 0.53. अच्छा नानोमीटर रे कहले 0.059 कर दबो 05 एठे गोटे 0 ऐड कर दबो एंगस्ट्रॉम रे कहले एति थिला नानोमीटर रे 053 नानोमीटर. ओके इनटू केते हि जीवा n square by z. पिला z टा एठी भूली जानती सेकंड ऑर्बिट कहिची
सो कहार कहिछि हीलियम प्लस n सेकेंड ऑर्बिट कहिछि n2 z भी केते लिखिबो प्लस अछि माने आ गोटे प्लस कर दबो केते हिजबो 2 कि आंसर कर सलनी हां देखी ऑप्शन सी लेट अस सी देखि दवा टिके आउ 0.053 into n square means 2 square by 2 गोटे कैंसिल हे गला ए जीवो 0.106 nanometer very right option C is the correct answer पढ़ी चल ए रेट रे पढ़ी चल डेफिनेटली दिवस एंड बेल को भलो रिजल्ट करियो नीट जेई हे जीवो व्यस्त नै पढ़ा पढ़ियाटू बड़ा भलो जिंस किसी नै the energy of electron in the first orbit of कारोटा देछि of a helium plus अच्छा helium plus रा दे देला ठीक है is this much energy of electron in first orbit of कोन हे जिवो हाइड्रोजन करियो जूल ले देछि है जूल पई फार्मूला माने थिबा En is equal to -13 ठीक अछि एटा भी थला किलो जूल इनटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर ए इक्वेशन रे पकई की कर दबो ठीक अछि करि साला परे ता कोठी कन्वर्ट कर दबो किलो जूल को एमती इनटू 10 टू द पावर 3 कर दे के ठीक अछि ना करबी हे जिवो देखा से तुमको कहि छी फर्स्ट ऑर्बिट माने E1 ऑफ कहार कहि छी हीलियम प्लस माने He प्लस इज इक्वल टू केते देइ छी देखा -871.6 into 10 to the power -20 जूल हबा हमको पचारि छी कहार फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन माने E1 of hydrogen is equal to केते हला यार फार्मूला तमे जानि छ ठीक जे चालाक थियो से जल्दी कर दबो फार्मूला जानि छ -13 into देखो एटा केते हे जे थिबो ना 10 to the power 3 जूल कर देली किलो जूल को जूल कर देली एठी रहिबो z स्क्वायर माने 1 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर एतिके आंसर एटा गोटे ऑप्शन रे अछि ना टिके यूज करिया को पड़ेगा याकू ना ए एक्सप्रेशन का एतिके दरकार के केता अछि z स्क्वायर बाय n स्क्वायर जेटा को केते पके देली 1 जेटा को केते पके देबी 1 ता माने मोर एक्सप्रेशन ता एतिके रह गेला माइनस एतिके into 10 to the power 3 joule 1 by n square अछि बर्तमान एटा यार एक्सप्रेशन ता थिबो -13 into 10 to the power 3 जूल कर देला ठीक अछि into z स्क्वायर जगह रे एटा थिबो 2 स्क्वायर बाय n स्क्वायर तो ए पटा केते अछि एतिक ठीक अछि ए 4 जो 4 टर्म ता आनी छ ए पटा आनी के डिवाइड कर दो तो तमर आंसर आस जिवो हला केवल जे एतिकी चालाकी देखेला तार हे जिवो जेटा जाकर एक्सप्रेशन लिखि देला या को आनी के पटा डिवाइड कर दो आंसर आस जिवो ओजी
अरे हपा एटा के कहि परिबो हां ठीक अछि एटा सहज अछि कहि दे परिबो जल्दी जल्दी एथरे सिना कैलकुलेशन थिला एथरे कोन अछि किछि नाही ऑलरेडी मोडा करि सारिछि पात्र कर कृष्ण पात्र ऑप्शन ए ऑप्शन ए हाइड्रोजन एटम देछि एटा न्यूक्लियस एटा हला फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन रे कोथरे थाए फर्स्ट रे एटा सेकंड ऑर्बिट एटा थर्ड ऑर्बिट एटा हला फोर्थ ऑर्बिट हबा इलेक्ट्रॉन जोठी रहिबा कथा सेठी रहिले दैट इज ग्राउंड स्टेट एटा तमरा हे गला ग्राउंड स्टेट सेकंड एक्साइटेड स्टेट एटा हे जो तमरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकंड एक्साइटेड स्टेट एटा सेकंड एक्साइटेड स्टेट ता माने ग्राउंड स्टेट पई एन टा केते हे जाईची 1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पई एन केते हे जाईची 2 सेकंड एक्साइटेड स्टेट पई एन केते हे जाईची 3 तमे E1 टा जानिचो E1 टा देछि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पचारिछि कोटा E3 एबे पा करथिली E1 टा एतिकिस E2 टा तमरा से -3.4 हाइड्रोजन रे 3.4 eV E3 टा से -1.51 eV हबा तापरे एनर्जी टा बढ़ी बढ़ी जीवन ना ऑप्शन सी ओके let us move forward azimuthal quantum number okay azimuthal quantum number कौन कहले ना it is denoted आज कौन हे जाइथिबो कह या को कहि परिबा ठीक अछि l it is denoted as l value starts from 0 goes up to 1 2 3 up to n minus l n minus 1 l value goes up to n minus 1 that is what I suppose n is equal to 5 what are the possible l values azimuthal quantum number na l will be अच्छा n minus 1 टा कते होची 4 ताले तमे कोठु को पर्यंत लिखियो 0 1 2 3 4 these will be the l values हवा तो कोठु को पर्यंत जाए 0 to n minus 1 अच्छा एबे ता विषय टिके देखि दबा azimuthal quantum numbers रे कोन कोन पाठ कहिला ठीक अछि याकू कहंती सेकेंडरी क्वांटम नंबर यार अन्य ना कोन कहिली सेकेंडरी quantum number azimuthal quantum number it was proposed by Sommerfeld okay so it was denoted first by the letter k but later it is modified to kon हे जो k cell रहिला बोली तो l को कन्वर्ट कर दिया गला ठीक है k cannot be 0 while l can be 0 ठीक है
it is known as यार other names देखो कौन others name अच्छी एथिरे angular orbital angular momentum काढ़ा हुए angular momentum formula देखिबा एबे तो सेथि पई याकू कह जाए angular momentum quantum number और subsidiary quantum number और secondary quantum number अब तीनटा जका ना तार ठीक अछि आउ azimuthal तो नीचे ठीक अछि L value depends upon n value ठीक अछि L value ranges from 0 to n minus 1 एबे लिखि देइथिली if n is equal to 1 L is equal to 1 minus 1 0 if n is equal to 2 L value 0 to 2 minus 1 that is 0 and 1 बुझी ठीक अछि अच्छा देखो it gives L value denotes subcell ये काहे को दिए सब cells और सब level of energy levels ठीक रे देखो ए गुडा कटिके जानिबा जिंस तो एथरे कहला when L is equal to 0 this gives you S subcell these are sub levels or these are also called subcells ठीक अछि subcells L is equal to 1, it gives P subcell. 2 gives D subcell. These are names coming from these words. C, S from sir. This S is from the word sir. P is from principal. Principal. D is from diffuse. ठीक है this is from fundamental like this it goes on प्रत्येक वर्ड गोटे वर्ड रो फर्स्ट लेटर रो आसी छी ठीक अछि तुमको कोरिलेट करियर अछि 0 L0 means it is a subcell L0 means it is a subcell 1 means P subcell you must know this one without this one you cannot move forward for 2 years ठीक अछि so this is important like sub levels distribution based on n plus l rule आगो को जिबा n plus l rule को एबे पई ताको टिके न देखले भी चलिबो ठीक अछि आगो पढिबा एनर्जी लेवल केमती डिसाइड रहंती एनर्जी ऑर्डर केमती आसे केवल एठी एति की जिंस कहिबी तमे जानलो कोन L is equal to 0 हेले ये को सबसेल S L is equal to 1 रे P तापरे L is equal to 2 gives you D L is equal to 3 gives you F subcell so the energy order is like this S P D F a sequence रे से तारा चलेली ओके sequentially लिखि से जिनसटा एठी मेंशन हैछि हमें जिबा तापर देखो when L is equal to 4 L has 4 values ठीक अछि अच्छा याको ना सुनो हम कहि दोछि ना केमते करंती नाटा एमते करंती सबले मन राखथिबा सबसेल name is equal to n value plus L name या माने कोन हला देखो गोटे एग्जांपल करछि ताले जानि परिबो if n is equal to 5 L is equal to 1 the subcell name will be n रो value लिखि दबो n रो value केता अछि 5 L टा 1 हेले एबे करथिले L 0 1 2 3 4 एमती हेले एवडा को सबसेल दियंती S P D F G 1 पई को सबसेल अछि P so it will be 5P okay so it's 5 6 जन हे जेथिले एबे टिके पढि जे क्वेश्चन मंथली टेस्ट क्वेश्चन पाउ तो मैंने पचारि उठी मंथली टेस्ट क्वेश्चन आपण जो दिया उच प्रति मास पाउ तो दउछु नहीं very good अच्छा पिले माने समस्ते जो मंथली टेस्ट होची
मंथली टेस्ट क्वेश्चन पाउच सॉल्व करूच जदि पाउच टिके यस नो रे जणैला कंफर्म करला को कॉलेज टिके कॉलेज नेम मेंशन करिवो को कॉलेज रे तमे अच्छा को कॉलेज मेंशन कर दियो हम ताको आज ताको कोतार कर सो दैट तमे टिके कॉलेज नेम मेंशन करले हमें सेठी के पर्टिकुलरली क्वेश्चन पठेइबो सो दैट तम माने पाइबो ठीक अछि डिस्ट्रिक्ट सिद्ध भैरवी कृष्णा पात्र टिके डिस्ट्रिक्ट मेंशन करिवो शुभलक्ष्मी कटक सेकेंडरी स्कूल अच्छा ठीक अछि बाकी माने बाकी जो माने अच्छा टिके भी कहि परियो कंपनी तम मानक बेनिफिट पे एटा करा हेछि पिले सब मंथ रे जहा पढा हेतिबो तार क्वेश्चन होछि तार आंसर भी पठे दिया जाउछि तन तम माने टिके कहिले बेनिफिट पाई परियो किछि क्वेश्चन प्रैक्टिस हे परियो क्वेश्चन लिंक रे किछ क्वेश्चन आसु क्वेश्चन हमें मेल ले पठौछु आपन को नोडल ऑफिसर को व्हाट्सएप ग्रुप रे पठौछु लिंक रे क्वेश्चन आछ लिंक रे क्लास क्वेश्चन लिंक रे आसेनी क्वेश्चन टा आपन को स्कूल को दिया होतो से माने आपन हार्ड कॉपी काढी देबे आपन परीक्षा देबे सेतर एक्चुअली इट इज कोन कहला गोटे ऑफलाइन परीक्षा बेलेश्वर हाई स्कूल अछि ऑफलाइन परीक्षा माने कॉलेज को तमरा गोटे क्वेश्चन पेपर जीवो जो डेट रे एग्जाम थिबो तम माने से दिन सेठी रही कॉलेज तुमको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करिवो सेथरे तमे ओएमआर शीट भी दे दिजो हम ओएमआर शीट भी सेठी रही छि तम केवल एन सर्कल करिवो सेटा कॉलेज रे इवैल्यूएट हे कि मार्केट के आसी के कॉलेज अच्छा अच्छा केमे का तो मैम सब हो थैंक यू स्टूडेंट्स जा हाउ एतिक इंफॉर्मेशन देइछ टिकट जेके भी बोले तो लॉक है 1 सेकंड हमें कंटिन्यू करिबा थैंक यू हमें डायरेक्टर मैडम को इन्फॉर्म करिवु आ हमें देखियो फर्दर स्टेप कोन निया हबो जे आपण माने क्वेश्चन काई पहुंची पाबे थैंक यू कंटिन्यू करू ओके अच्छा नेम ऑफ सबसेल जानी गले ठीक अछि देखा गोटे कर दोची आकु पळैबा इमीडिएटली इफ n is equal to 3 l is equal to 4 what will be the name of subcell so it will be n for 4 sorry this will be 3 3g हाँ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ସେଇଆ କହିବ ପିଲେ ସବୁ ବେळे माइंड स्थिर करके ये सब क्वेश्चन करिवो कोन पई n3 means l value will be 0 1 2 it cannot have the value of 4 so 3g is not possible केबे भी लिखि दवनी 3g it is not possible जेतल करिवो l value
is within 0 to n minus 1 प्रथमे चेक करिवो परमेश्वर ठीक अछि चेक करिकी करिवो नहले भूल हे जिवो ठीक अछि ओके सो मूविंग फॉरवर्ड ठीक अछि the number of L values is equals to magnitude of n जेतिकिटा n थिबो सेतिकिटा L value आसीबो the energy of various subcells are in the order SPDF how टिके पूर्व लिखि देथिली SPDF ए सीक्वेंस रे रहइबो it tells about the shape of orbitals एथिरे अपेक्षा how टिके परे पढिबा एटा एक्चुअली कोथरे आसीबो मैग्नेटिक रे एठी खाली हिंट्स मिले एठी ओरिएंटेशन पई मैग्नेटिक रे पढिबा चित्र सह पढिबा ओके सो the orbital angular momentum एथिरु ए इंफॉर्मेशन बहुत इंपोर्टेंट the orbital angular momentum is given by यार angular momentum mu L is equal to L into L plus 1 the root over h by 2 pi so scientist मानक हाथ काटे बोली एटा बोर मैग्नेटन रे यूनिट आसीबो ठीक अछि साइंटिस्ट मानक हाथ बहुत काटे एते लेखा लेखि करंती सो से माने गोटे शॉर्टकट यूज करंती सो L into L plus 1 h क्रॉस मेळे बेले तुमको h क्रॉस टर्म रे देथिबो सो मन रखिथिबो h क्रॉस is equal to h by 2 pi okay so यार implementation देखा for s subcell ठीक अछि मते कह l वैल्यू केते आसे 0 so angular momentum this is angular momentum I can write angular momentum is equal to mu l is equal to देखा l जगह रे केते पकेबा 0 पकेले ए वैल्यू केते आसुची 0 ओके सो सब बेले ए सब सेल रा एंगुलर मोमेंटम केते आसिला 0 देखा जण कहबो सर 1s रा एंगुलर मोमेंटम केते आसीबो ना 0 2s रा केते आसीबो 0 3s रा केते आसीबो 0 जे कोन जिंस रखले केते आसीबो 0 s सब सेल माने एंगुलर मोमेंटम विल बी ऑलवेज 0 l sp let us go for p subcell l will be equals to 1 that is angular momentum will be 1 into 1 plus 1 so it is giving you root 2 h by 2 pi और देखा याको लिखि परिबा और root 2 h cross को ऑप्शन ने दे परिबा देखा पिले पुणी जाने √2 कैंसिल कर देले केते पाई परिबा को h by √2 पाई तीनटा ऑप्शन √2 h by 2 पाई दे परिबा ठीक अछि √2 h क्रॉस कहि परिबा h by √2 पाई भी कहि परिबा को ऑप्शन देथिबो तमे चेक करियर अछि दिटा भी दे पारे किछ असुविधा नहीं ताले देखा एबे एमती भी कहि परिबी जे 2p 3p 4p जहाँ भी आसिले ए समस्तंकर एंगुलर मोमेंटम विल बी √2 h क्रॉस और √2 h by 2 pi और h by √2 pi क्लियर ओके देख सेमती यार काढी परिबा for d subcell by l is equal to 2 so it gives you angular momentum 2 into 3 root over h by 2 pi that is equals to √6 h by 2 pi I can write this one as √3 by √2 h by pi okay
देख एठो √2 कटि गले तळे रहिबो केते √2 ऊपर रहिबो केते √3 तो किछि भी ए ऑप्शन भीतर कोटा भी दे परिबो f सब सेल रे value l is equal to 3 so angular momentum is equal to 3 into 4 root over h by 2 pi ओके या को तमे एतिकी भी कहि परियो रे √6 h cross ठीक अछि this is equal to √12 h cross this is equals to एतिकी लिखि परिबी √3 h by pi root over 4 केता आसीबो 2 ओके देखा सिमिलरली g सब सेल g जाय करूची आ ता परठू तम माने कर परिबो g सब सेल l is equal to 4 so angular momentum will be 5 कोड़ी root over of 20 h by 2 pi ओके एटा आसी जिवो root over of 20 h cross or is equal to √5 by √2 h by pi clear ताले समस्त एंगुलर मोमेंटम सिखियला bm is your bore magnetum ता वैल्यू अछि ठीक अछि सेडा फिजिक्स रे दरकार हमर केवल एंगुलर मोमेंटम रे काम हे जो सब तक हिसाब करिके लिखे देछि ठीक अछि और p सब सेल केता आसुची h by √2 pi d पई करा हेछि f पई करा हेछि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये गोटे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2 into l plus 1 लिखि देछि और 4l plus 2 सपोज देखा कहली p सब सेल सो इलेक्ट्रॉन केने काउंट करियो p पई l वैल्यू केते 1 so l is equal to 1 so formula is 2 into 2l plus 1 so this is giving you 2 into 3 is equal to 6 so maximum electron in p sub cell is your 6 अब ठीक है जदी चेक करिवो मु एठी लेखुची सब सेल या पर लेखि थिबी जाउची ठीक अछि लेखा l is equal to 0 only 2 electrons can be accommodated in s l is equal to 1 p sub cell can accommodate 6 तो यार देखा गोटे टेबुल आकार भी देखि दे परिबो ताको किछि गोटे कहिछ ना शुभलक्ष्मी ऑफलाइन क्लास होनी बट ऑफलाइन क्लास होने क्लास टा ऑनलाइन रे होची एग्जाम टा ऑफलाइन रे होची जो मंथली टेस्ट टा दैट इज ऑफलाइन एट योर कॉलेज ऑफलाइन क्लास टा हुए केतबेले जेतबेले त माने सेकंड ईयर पास आउट हे जा सेठी गोटे पूरा क्रैश कोर्स हुए ऑफलाइन रे गत वर्ष ठु इम्प्लीमेंटेशन हेची माने सेकंड ईयर एंड रे बोर्ड एग्जाम देई सारंती से माने अप टू नीट एग्जाम पर्यंत भुवनेश्वर सेंटर रे बीजेपी कॉलेज सेंटर रे रही के ऑफलाइन क्लास करंती रिवीजन ठीक अछि क्रैश कोर्स ठीक अछि तम माने भी से फैसिलिटी नहीं परिबो गवर्नमेंट ट्राई करूची ओटा परमानेंट एंट्रांस बैच करिया पई समस्त सपोर्ट रहिले हेई परिबो ठीक अछि बहुत पिला सब दिन अटेंड करियो जदी क्लास जते अधिक संख्या रे इफेक्टिव रहिबो इंटरेस्ट रहिबो सेही हिसाब रे सेटा जल्दी इम्प्लीमेंटेशन होय ठीक अछि
ठीक अछि देख आकु जीवा क्वांटम नंबर आज थिला ताको सारीबा ठीक अछि जी रे तमर केतेटा इलेक्ट्रॉन रहिबा ए देख याकू गोटे टेबुल आकार रे करथिली बथे देख अच्छा ठीक है क्वेश्चन पळे आसला ठीक अछि एठी मु कहि दउची गोटे शॉर्टकट कहि दउची ताले तम मान को टिके इजी हे जिवो सुन सुन न करिथिबा जदी पर्टिकुलरली मु कहिबी हमर एटा गोटे कोन अछि पोर्टल नेम टा कोन अछि ज्ञान ज्योति शिक्षा ज्योति पोर्टल रे आ तम कॉलेज रे तम नारे गोटे आईडी पासवर्ड क्रिएट हेची ठीक अछि तम माने कॉलेज रु से आईडी पासवर्ड पाई परिबो शिक्षा ज्योति पोर्टल रो ठीक अछि से शिक्षा ज्योति पोर्टल रे जहा जहा पढ़ा होची सबु तक यूट्यूब लिंक आकार रे रिकॉर्डिंग रहिची इफ यू आर मिसिंग एनी क्लास प्लीज गो टू दैट चैनल read it from it will record your reading time also तमे धर गोटे वीडियो अछि 40 मिनिट्स रा तमे पूरा वीडियो देखिला से तुमको शो करिवो ए तमे आज दिन रे 40 मिनिट्स पाठ पढिछ तमर अटेंडेंस भी रिकॉर्ड हे परिबो दिस इज प्रोवाइडेड बाय आवर ओडिशा गवर्नमेंट सो माने हायर एजुकेशन सिस्टम रे एटा हमर इंप्लीमेंट करा हेची ठीक अछि तो समस्त तमे से लिंक भी देखि के ये करि परिबो ठीक अछि जहां मो पाखरे इन्फॉर्मेशन थिला तो से आईडी पासवर्ड तमे कॉलेज किबा एठू कलेक्ट करि परिबो ठीक अछि तो गोटे दिन धर मिस कर जाइछ से लेक्चर्स गुडा को देखि दियो हे जिवो जहां मिसिंग पाठ अछि सीक्वेंशियली देखि दबो हे जिवो ओके ओके ठीक अछि मैं आज कहि दउची से तार लिंक सेंड कर देबे ठीक अछि मैं आज कहि दउची से लिंक सेंड कर देबे हो सुन पाठ गुटी पळे आसीबा एठी हमर रहिला सब सेल ठीक अछि सब सेल एठी रखिली ऑर्बिटल्स एठी रखिली इलेक्ट्रॉन्स देखा सब सेल हला s p d f g देखा ऑर्बिटल स्पेलिंग o रु स्टार्ट तो यार संख्या भी ऑड नंबर रु स्टार्ट हबो 1 3 5 7 9 like this okay इलेक्ट्रॉन स्पेलिंग e रु स्टार्ट तो ये रहिबो इवन नंबर रु स्टार्ट फर्स्ट इवन नंबर के हे जिवो 2 ओके नेक्स्ट इवन नंबर के 4 एठी 4 लिख दवनी 4 मिसे चलीबो 2 रे 4 मिसे केते हे जिवो 6 एथरे 4 मिसे केते हे जिवो 10 एथरे 4 मिसे केते हे जिवो 14 तापर केते हे जाउची 18 यू रे भी मन रख दे परिबो हला एतिक जिंस लेखा हेछि ठीक अछि very good 2 6 10 etc ओके तो आज मथल क्वांटम नंबर बिचारे आइडिया हे गला ठीक अछि वर्तमान जीवा कहा पाकू ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आडको मूव करिबा गोटा क्वेश्चन अछि टिके देखि देई के चलो the angular momentum of electron in second orbit is तंको सारेटा कोथिर पाठ पढाय आसिला सेकंड ऑर्बिट कहिछि ताहले आजि मुथल साइड रे हबो ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रे हबो ऑर्बिट कहिछि सब सेल नुह ऑर्बिट कहथिले n टा केते नै जीवो 2 सेकंड ऑर्बिट पई तो एंगुलर मोमेंटम
केता आसीबो NH by 2 pi so 2H by 2 pi तो 2 2 कैंसिल हे गला केता रहिला H by pi very good very good ठीक है the angular momentum of electron revolving in an orbit is equals to the formula ta NH by 2 pi first have answer चलो जिबा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हाँ सहज थिला बोली टिके आकु पळैली जल्दी वेरी गुड ऑप्शन है ओके लेट अस गो टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से इथरे बहुत सारा क्वेश्चन रहिबो ठीक अछि सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर व्हाट हैपेंड ना सी देखियो देखो shape of orbitals हाँ एट देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर designates the orbital to which electron belongs ये कौन दिए ता माने प्रथम क्वेश्चन हला gives you the orbital concept okay describes the orientation of orbital गुडा को केमिति रहंती तांकर शेप कोन आसीबो ठीक अछि सबुठारु बड़ जिंस ए थर्ड पॉइंट accounts for the splitting of lines of atomic spectrum in magnetic field actually कोन हला ना सब सेल देखो गोटे p सब सेल सपोज निया हेची p सब सेल ठीक अछि ये ओनली सब सेल जेतबेले थिला गोटे बैंड आकार रे थिला बा गोटे एनर्जी लेवल आकार रे थिला ठीक अछि हेला कोन ना जेतबेले लिंडे प्रोपोज्ड बाय लिंडे अछि तो सी टाइम रे से कोन करले ए सब सेल ऊपरे गोटे मैग्नेटिक फील्ड ता माने ता पाखरे गोटे हाई पावर मैग्नेट रखिले हले रखिबा जोगु ये गुडाक किछि लाइन स्पेक्ट्रम देले बा लाइन को डिवाइड हे गले ठीक अछि तो देखा गला ये तीनटा लाइन देला के पी सब सेल हला ता माने ता भीतर केतेटा एनर्जी लेवल थिले तीनटा सेथि में से केतेटा लाइन देछि तीनटा जहा पाखरे जतिकटा लाइन थिले से माने स्प्लिट हे गले ठीक अछि तो ए जो स्प्लिटिंग टा कहा प्रेजेंस रे हला ना मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस रे हला मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंस रे हेथिबा जको एना कोन दिया हेछि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओके तो ए जो इफेक्ट स्प्लिटिंग ऑफ सब सेल्स इनटू फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस by application of magnetic field is called Zeeman's effect कोन कहला Zeeman's effect. Okay, this is called Zeeman's effect. माना अब तो कौन है गला ना सब सेल are divided into orbitals by application of magnetic fields. This is called your Zeeman effect. Okay, so let us see magnetic quantum number symbol कौन आसिला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर माने कोन हे जिवो m ठीक अछि सिंपली m वैल्यू केते आसीबो आ केतेटा आसीबो ठीक अछि तो पाठ कहिला m नंबर ऑफ m वैल्यूज केते हे जे ना 2l plus 1 जेति की l वैल्यू थिवा अच्छा गोटे एग्जांपल कहूची ताले जानि परिबा 2l plus 1 ठीक अछि अच्छा मु कहिली l is equal to 2
number of m values will be 2 into 2 plus 1 तामाने ये हेगला 5 पांचटा m value रहिबो किंतु 5 ता value नुह value गुडाक किए ना minus l to plus l through 0 minus l to plus l through 0 होगा so the values will be देखो l टा 2 अच्छी तो minus 2 रो plus 2 through 0 means minus 1 0 plus 1 how many values are there 1 2 3 4 5 this is giving you 5 values okay clear this class will be over at 10:45 okay 10:45 so moving forward देखो पहले बर्तमान एस रे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स केते रहिबो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स केते रहिबो ना एस रे केतेटा आसीबो 1 पी रे केतेटा आसुची तीनटा के आसीबे px py pz तीनटा एक्सिस px py pz ठीक अछि डी रे केतेटा रहिबे पांचटा ऑर्बिटल एबे हम चित्र आकार रे तांको देखिया 5d ऑर्बिटल्स आर dxy dyz dxz dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इटे कोन साइड को हटि जाइछि ठीक अछि आ थर लिखि दबा किछ असुविधा नहीं ठीक अछि तो चलो ए मानक विषय रे टिके देखिबा से कहिला जो ऑर्बिटल्स अछंदी तांको शेप विषय रे चलो टिके देखिबा ठीक अछि तो प्रथम शेप आसीबो तमरा s ऑर्बिटल ओके s ऑर्बिटल इज स्फियरिकली सिमेट्रिकल एठी टिके सब बेले मन रखिबो ये स्फियरिकली सिमेट्रिकल ता माने ता सेंटर रे के रहिबो ए सेंटर रे रहिबो न्यूक्लियस चारि पट को समान डायरेक्शन रहिबो ठीक अछि माने समान डिस्टेंस रहिबो आ मन रखिथिबो गोटे स्फियर ए स्फियर हैज no direction so only orbital which is non directional in nature is your s orbital this is s orbital this is the shape of s orbital for s orbital l value is equal to 0 m value is equal to 0 again I am saying l value m value both are 0 okay this is the shape of s orbital it is spherically symmetrical ठीक अछि non directional in nature हमको तो सर ये काहे स्फेरिकल एंदे आसेला प्रथम रु क्लियर कर दोछि these are not ordinary pictures these are graphical representation कोन कहली graphical representation तम कह सर ग्राफ जदि एटा गोटे ग्राफ ताले ये कोठो ग्राफ आसीछि and this is from Schrodinger wave equation m value 1 हबो m value 1 हबो नाही total number of m values 1 हबो m value टा 0 हबो m 1 केतबळे आसीबो या पर केस रे करिया p सब सेल ठीक अछि ओके सुनो बर्तमान देखा m value गोटे रहिबो m value टा गोटे रहिबो से value टा किए ना 0 ठीक अछि s orbital पई m is always 0 l is always 0 clear m1 हे परिबनी s पई ठीक अछि कंपाइना l value is 0 means m value will be from -0 to +0 through 0 ताने केता आसिला 0 ठीक अछि clear shape कोन आसिला spherically symmetrical directional ना non directional सर non directional वर्तमान आसीबा s कथा कहिली p को जाउची p रा डिटेल्स रेट हे करूची देखा p रे पाठ कहिला प्रथमे क्वांटम नंबर देखा p पई p orbitals रे कोन हे जाउची को l is equal to 1 so m value will be
-1 to +1 through 0. So how many values are here? 3 values. 3 values. What are the values? Are -1, 0, +1. Okay. So each value represents one orbital. Each value एटा गोटे orbital दबो, ये गोटे दबो, ये गोटे. तो p subcell रे केतेटा orbital अछि? 3 orbitals अछि. किए किए अछंती ना तांकर m value हला -1, 0, +1. सुन देखो काहाको भी किछि भी ऑर्बिटल ना दे परिबो. सपोज मु कहली ये x डायरेक्शन रे रहिला, दिस इज px. हबा जण कहबो एटा py, एटा जण कहबो pz. सर सब बेले एमति नै परियो ना, चेंज कर परियो. तमे चेंज करि परिबो, बट आमे z एक्सिस टा को मॉलिक्यूलर एक्सिस बॉन्डिंग रे z एक्सिस रे बॉन्डिंग देखो समस्त को कन्वीनियंट टाइम बोली हमें z एक्सिस रे काहा को नै जाय छे, 0 टा को नै छे. जण कहबो नै सर मु एठी y लिखबी, एठी z लिखबी. नो प्रॉब्लम, लेख किछ असुविधा नहीं. ठीक अछि. अच्छा px py pz रा वैल्यू केमते लिखियो देखो. ठीक अछि. दिस इज x एक्सिस. ए जो चित्र केन करियो, दिस इज x एक्सिस, दिस इज योर डम्बल शेप. अब दिस इज योर डम्बल शेप. तो एथिरे ए जो ए गोटे हाफ अछि, दिस इज कॉल्ड ए लोब, सो एथिरे मन रखिथिबो गोटे डम्बल, one dumbbell has two lobes, one dumbbell has two lobes. अब डम्बल रे केतेटा लोब रहउची? गोटे, दीटा लोब. गोटे डम्बल रे दीटा लोब. देखो ये गोटे लोब, ये गोटे लोब, ए टोटल टा होची गोटे डम्बल. दिस इज p ऑर्बिटल. जेमती x एक्सिस रे रहिला px, सेमती y एक्सिस रे के रहिबो. सपोज मु एटा को कह देली y एक्सिस, तो दिस इज गिविंग यू py. एटा थिला x एक्सिस, एटा z एक्सिस. ताले pz टा केमती हेथिबो? एमती हबा ए पटे रखि देला. दिस इज गिविंग यू pz ऑर्बिटल. हबा ठीक रे सुनो. ए जो मझी पॉइंट को कहा जाए नोड. दिस इज द नोड को पॉइंट को कहा जो ये फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0. at this point electron cannot reside, एठी इलेक्ट्रॉन रही परिबो नाही. अब देखो लोब भी केमते थाए. ये जदी पॉजिटिव लोब आसीबो, ये हे जिवो नेगेटिव लोब. हला अच्छा प्रथम जिंस आफरी कहूची p रा सब p ऑर्बिटल रा शेप कोन आसिला? डम्बल. गोटे डम्बल ले केतेटा लोब रहिला? दुईटा. गोटे लोब कोन अछि? पॉजिटिव लोब. गोटे कोन अछि? नेगेटिव लोब. the point where lobes change sign, एटा हे जो तार कोन नोड बा द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन केते हे जिवो 0. हला वर्तमान केतेटा डायरेक्शन रे रहउचंती? तीनटा डायरेक्शन के x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस. along x axis you have px orbital, along y axis you have py orbital, along z axis you have pz orbital. So all are dumbbell shape. Okay, so these are always axial orbitals. These are axial and they are directional. eta thila non directional. These are directional. yankar direction rahichi. yes kon hela? नोड कैलकुलेशन अछि पा या पर क्लास रे अछि. नेक्स्ट क्लास रे नोड कैलकुलेशन अछि. हबा नोड कैलकुलेशन भी सिखे दिया जिवो. रेडियल नोड, ये नोड सब अछि व्यस्त. ठीक अछि. सो देखा बर्तन शेप सिखि जा, तापर नोड कैलकुलेशन को जिवो. तो बर्तन रहिला completed up to p orbitals. Now let us go for d orbitals. d orbitals रे पाठ कोन कहिला टिके चेक करियो. ठीक अछि. d orbitals पई d orbitals. अच्छा तमे पिले कहिबो एगुडा को डम्बल शेप ता तो सर एमिति थिला. आमे देखिछु डम्बल एमिति थाए.
एटा एमिति काहे की हेच माने मझिटा नेरो दीपटा दीटा मास थे हमको स्टार्टिंग रो कहली एथिरे भी सेया हेची इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनुसार ये रहिची ये नॉर्मल जिंस नुहे ये गोटे ग्राफ रे पॉइंट गुडा प्लॉट कले जेमिति से आसीबो सेया हेची डम्बेल रो गोटे साइड रे मास अधिक आ गोटे साइड रे मास अधिक मझिटा नेरो एटा भी सेमती इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेमती हेची बोली याकू कहा जाए डम्बेल शेप नाही कि सेही बळिया देखा जिबा जरूरी ठीक है क्लियर एगुडा को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो फॉर डी सबसेल पई l is equal to 2 so m values are -2 -1 0 +1 +2 so 5 d orbitals are there their names are dxy dyz dxz dx square minus y square dz square हवा ठीक अछि सो टिके तार शेप देखि दबा dxy xy मींस से को प्लेन रे थिबो xy प्लेन एठी देखा जाउ तो तुमको 3 डायमेंशनल पिक्चर टा जति मु एटा को कहिली जति मु एटा को कहिली x एक्सिस अरे पड़ेगा एटा तो px py pz रो देखैली गोटे हां d रो देख d रो टिके ऑर्बिटल पिक्चर उडा को देखा ताले हे जिवो देखा एठी ओहो एटा डम्बेल रह जाय पिले एटा गोटे लिखि दबा डबल डम्बेल शेप यांको कोन कहे जाय डबल डम्बेल शेप काहार d ऑर्बिटल्स रा शेप आसीबो सब बेले डबल डबल वाटा केंदी मिसिंग रह जाय ओके सो देखो दिस इज योर x एक्सिस दिस इज y एक्सिस इन बिटवीन एक्सिस ता माने एमती देखा जाउथो किछि एटा हे गला x एक्सिस एटा हे गला y एक्सिस या मझी रे एमती डम्बेल गुडा कर रहिबो हबा तो ये हे जब तमरा कोन dxy xy प्लेन रे रहिबो प्लेन रे देखो एक्सिस ऊपर नाही इन बिटवीन एक्सिस माने xy प्लेन रे अछि यार साइन केमती दियंती देखो एपटे प्लस x प्लस y तो ये प्लस एपटे प्लस माइनस x प्लस y तो माइनस एपटे देखो माइनस x माइनस y प्लस एपटे कर दबा माइनस y प्लस x माइनस तन दीटा ऑपोजिट प्लस रे दीटा ऑपोजिट माइनस रे हबा एमते प्लस माइनस भी दियंती जाने हेला ठीक अछि तो xy प्लेन रे के आसिला dxy yz प्लेन रे देखा एटा y एक्सिस एटा z एक्सिस ता मझे रे अछि ताले ये कोन हे जिवो dyz हबा एथिरे देखा dx और z भीतर रहिले ता कहचे कोन xz एगुडा को एक्सियल रे अछंती ना प्लेन रे अछंती प्लेन रे तन करी यांको कह जाय नॉन एक्सियल d ऑर्बिटल और ए तीन जन को कह जाय प्लानर d ऑर्बिटल planar d orbitals ताले which are planar d orbitals and dxy dyz dxz हबा बर्तन पांचटा रु तीनटा ऑर्बिटल हमें सिखि गले प्लेन रे अछंती बाकी दीटा को कोठे रखा है ना पाठ कहला एक्सिस खाली अछि तो x एक्सिस ऊपर ता माने ये किछि एमते देखा जीवा if this is your x axis this is y axis you are having one dumbbell on x axis one dumbbell on z axis y axis then this is called your dx square minus y square okay so this is the structure of your dx square minus y square then what about the last one this is your dz square company sabu axis dita axis
ସବୁ ପ୍ଲେନ ସରି ଯାଇଛି ତ କେବଳ କୋ axis ବଳିଛି z ତ z axis रे केतेटा डम्बेल रहुची दीटा हबा ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଦିଟା ଅଛି ବୋଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ହେମିସ୍ଫିयर ଅଛି ओके कोन अछि गोटे हेमिस्फियर ता माने या पाखरे गोटे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तमरा ठीक अछि ए जगह रे गोटे तमरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहिबो ठीक अछि कोन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहिला याकू कहंती हेमिस्फियर ठीक अछि हेमिस्फियर हबा यार नेम देखो ये भी डबल डम्बेल एक्चुअली ये एमिति अछि गोटे डम्बेल एमती ता पछरे गोटे लुचि के रहि जाइछि तो दीटा डम्बेल अछंती एठी तो ताकू गोटे हेमिस्फियर रे देखैछ एटा इक्वेशन रु आसीछि z स्क्वायर अछि माने z एक्सिस रे दीटा जाक डम्बेल रहिछि क्लियर तो एटा जदी पॉजिटिव नै जीवो ए हेमिस्फियर रे जो रहिला ताकू कोसाइन दे तबो माइनस this much you must know अच्छा सबुठारु इम्पोर्टेंट यार स्ट्रक्चर डबल डम्बेल समस्तक स्ट्रक्चर डबल डम्बेल यार किछि स्पेशल स्ट्रक्चर देखा जाउची तो यार ना कोन रहिबो याकू कहंती डोनट शेप डोनट खाइछ ए जो कोन ताकू सब मैकडोनाल्ड ये जो पिज्जा बर्गर जेमति खाउचंदी सेमति ओटा डोनट माने चॉकलेट सॉस फॉस पड़िथिबो ठीक अछि तो ता शेप रहे मझरे देखा एटा डोनट शेप अछि ऊपर को गोटे कोन हेछि तमरा लोभ दिटा रहिछि मझिटा तमरा डोनट माने अमेरिकन बरा कहले चले ठीक अछि हम बरा लुणिया लागे ताक बरा मीठा लागे ठीक अछि एति के फरक सुनो और याक कहंती बेबी सुथर से देखिबे छोटो छुआ को सोईबा पई पाटिले गोटे रबर टाइप रा दे दे के सोईबा पई छाड दोचंती सेई जिंसटा ना होची बेबी सुथर से ओके सो यार दिटा एक्स्ट्रा ना पाइलो डबल डम्बेल सहित कोन रहबो ये क्वेश्चन पढ़थियो व्हिच डी ऑर्बिटल हैज ए हेमिस्फीयर केस यो dz स्क्वायर which has a donut shape कोन हे जीवो dz स्क्वायर ठीक अछि अच्छा axial d orbitals are दीटा के dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हबा एति के थिला तमरो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शेप ऑफ ऑर्बिटल्स विषय रे पाठ ठीक अछि तो आगो उटे देखि दिया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से लिखा हेछि ठीक अछि जहा पढ़ले कहिथिली दिस इज कोन हे जाउची जी मेन्स इफेक्ट लिखि देछि पिले त डेफिनेशन दा लिखि देछि it explains the main effect the splitting of a single spectral line into number of closely spaced lines in presence of strong magnetic field is called kona G-Mann's effect haba the total number of m values are given by etiki ए सब जिंस पढ़ी सारिछ तो खाली ताको एग्जांपल आकार लिखि दिया हेछि ठीक अछि डायरेक्ट चलो स्पिन क्वांटम नंबर भी तमर कहि दोछि एठे कहि दोछि तो स्पिन क्वांटम नंबर स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन रु आसी नाही स्पिन क्वांटम नंबर कोठु आसीछि ना तार स्पिन ओरिएंटेशन गोटे ऑर्बिटल ले जतले दीटा इलेक्ट्रॉन रहिबे दीटा इलेक्ट्रॉन से माने इलेक्ट्रॉन टा एटा न्यूक्लियस circular orbit रे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कला बेले it moves like earth motion माने it revolves around nucleus also एटा धर गोटे रहिला तमरा स्फीयर टा तार गोटे एक्सिस रहिबो से निज एक्सिस चारि पटे भी एमते बुलिबो ठीक अछि इलेक्ट्रॉन टा एमती एठी इलेक्ट्रॉन रहिला से न्यूक्लियस चारि पटे एमते बुलुची प्लस निज एक्सिस चारि पटे भी बुलुची पृथ्वी बडी ठीक अछि सो एटा को कहंती तारा स्पिन एठु आसी जी इफ rotation is clockwise then it gives a spin value because देखा दी प्रकार रोटेशन हे परियो क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्लॉकवाइज हेले
तमे ताको कहिबो प्लस हाफ स्पिन यदि एंटी क्लॉकवाइज हला एंटी क्लॉकवाइज ताले तार स्पिन आसी जिवो माइनस हाफ हला so spin quantum number has only two values either plus half or minus half plus half is clockwise anti-clockwise is minus half is your anti-clockwise this is shown as up arrow this is shown as down arrow okay so ताहले देखा जदि मु दीटा इलेक्ट्रॉन एमती सेम रे रखिली दीटा ऑर्बिटल अछि सेम दीटा जाक प्लस हाफ रे रखिली then these are called parallel spin ठीक अछि जदि दीटा जाक उल्टा रहिले गोटे अप रे रहिला गोटे डाउन रे then these are called anti parallel spin हवा तो एतिकी थिला स्पिन क्वांटम नंबर रा पाठ तापरे स्पिन कैलकुलेशन अछि मैग्नेटिक मोमेंट अछि ताको लेटर स्टेज रे देखिबा ठीक अछि सो आज पई एति क्लास बुझा पड़ला नेक्स्ट क्लास रे हमें तार प्रॉब्लम भी कर दवा अछि ठीक अछि इज इट ओके जदि ठीक ठाक अछि यस नो किछि कुह देन वी विल क्लोज लागला क्लास किछि सिखिला thank you very much okay thank you आखरी टाइम मिलले धीरे धीरे बहुत सारा जिंस शिखि परिबा ठीक अछि एबे जति टाइम मिलछि सेतिके रे बहुत सारा करिया पई ट्राई चली छि तम मानक विषय रे टिके माने तम मानक फ्यूचर पई ठीक अछि थैंक यू ओके